uh, Mr. Dr. A. Venkateswar Rao, sir. Sir is heading that as general manager, the Neospark company. Neospark is a very good company for all the health product. Not only health product, they have also launched a feed also recently. We welcome you, sir, for your kind gesture and coming here. And also we welcome Mr. Arun Das, who is the owner of MD of the Insectica Biotech Limited company. He's taking all these ingredients like apankara jo ingredient feed pai use hochi ta direction le se kama kurchanti. And Mr. Vijay Devta, please come. He is representing our Abanti group of industry, and Odisha, he is the regional chief of the state. We are so happy that you could come here and represent here. And so, he will be coming. Sir, namaste, sir. We are so happy, sir, to welcome you here. We are really all of our fraternity, and we are all the disciple of Thomas, sir, who is Dr. P.C. Thomas, my guru, and everybody's guru here. We are so, it's a very heartening moment for all of us that sir has come. Sir, you would like to? Yeah. So I would request now Mr. Mohammad Asif, the Abis Export Private Limited. Please come and we welcome you, sir, to come to this industry academia meet. And Amo Sangre Aujone Achanti, Amaro, the son of soil here, Mr. Kameswar Rao. Mr. Kameswar Rao. And Amaro Aujone iti pass itiba chatra, Mr. Sapan Patra, who is passed out our own graduate from here. ଆଉ ସିଏ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କର ହେଚେରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ he is serving a big he is filling up the gap, the quality seed requirement and organic and biofloc production is giving a new diganta to all together. We welcome you, Mr. Sapan. Kameswar, yeah. Okay, one more chair, Kameswar. Okay, so now without further delay, because we are already running short of time, we would like to have some kind of brainstorming and some kind of discussion. We'd like, I'll request sir to initiate. Everybody will speak about our contribution, our what is the presently what we are doing. And I know some of the things to some of you want to present a small this one, that will keep, of course, that one. And I would request my senior colleagues to speak, sir, something to this industry meet. Good afternoon, friends. First of all, my thanks to the organizers that they have had such a nice session over here. Industry academia interaction. And as we know that as a scientific community, as a research institutions and as a human resource development centers like the college and the fisheries college per se, the role or the responsibility lies on the human resource development on the first aspect. And second is the industry-based research, which has to go through the industry to the end users. In this context, the ICR institutions, I will say for all the ICR institutions, their role is that how to come out with the solutions for the common problems. So, and it is not only the problems, it is the development, it is the basic research, it is the strategic research, and there are many other aspects to the research and the human resource development. The important aspect is that we have to look into that, what is the requirement of the sector, what is the requirement of the industry, and then what is the requirement of the state and the country. When we are able to target the
problems. The problems may be the steps, but ultimately they are going to resolve the major issues. And to me, or what I understand, that the major issues are that if we are able to produce enough for the people, if we are able to produce wholesome product, fish and fisheries product for the people who wants it. The another aspect here is that the present level of production, the target production, and the reach of those produce to the end users who wants it. In this quest, the proper and qualified human resource, the professional trained manpower, if it is available, and how much are the resources like aquatic resources and the water resources, if they are available, and whether we need the technologies to enhance the production, to enhance the productivity, and to reach out to the consumers, a very important thing. The another important aspect is that sitting in the college or the institutions where we see that we are offering different types of certified courses like bachelor's, master's, and doctoral program, whether they are sufficient or whether they need some other para-professional courses also, to the extent that we should look another 25 years from now that what will be required and how we are going to bridge the gap. The another important aspect is that if the technologies available today with the research institutions are reaching through our system or reaching through industry to the people. If there is a gap, then we have to look into that, what are the gaps. The another aspect is that we have to look into this, what is the requirement of the industry, wherein we have to focus on. And third aspect is that if there is some requirement from the industry side, then how actively and positively they are contributing to the research system. It is not a system one way. It is two-way system in which both the partners get the advantage. And then that advantage go to the people and they multiply it and bring those product through their multiplier system. Those multiplier system may be anything, and then reach to the industry, reach to the people. So these few aspects, now I'm not going into the technical details of it, because when we talk about different components of the sector, then there are many, many, and many. So if we oversee that, and we try to see that what are the areas we have to address, whether we have to address at a very basic level, we have to address at the applied level, or whether we have to address the things which are already available to make it convenient that you get it and the things reach to the people. If we see that what is the requirement, what is the availability of the fish, if we talk about the fish, because most of the data is already available, and then how many people who are fish consumers, and if we want to increase that number, then how much is the requirement of the fish, that also need to be seen. And it is not only the fish as a commodity, I talk about all the products which are coming from the fish as a basic source or basic resource. So these things need to be discussed openly, requirement has to be recorded, and solutions need to be provided, and then all the solutions are not available at a given point of time or right away. There may be something which are available right now, there may be something where we can step in, and maybe it will take some incubation time, and then the solutions are available. So based on that, I would like to say that if these things are brought at a common platform and discussed, and some solutions can be found out, recommendations can be drawn, and accordingly we can move forward. And everywhere we see that there are the fund crunches are there in every place we talk about. So then there may be something which you have, which we can use it, or there are many things which we have which you can use it. So if we can do that,
perhaps it will be the optimization of the resources and better output might come out of it. So with this initial remark, I would like to request my colleague, Dr. Sahu or Dr. Chakravarti to talk on. Thank you so much, sir. Before we go, I think I will request Kamesh Sirji, please come. I have already told, please come and occupy your seat. And I also request Acharya and Assistant Professor here, Arpit Acharya, and Kamlesh Panda to be the rapporteur for this session, if you are here around. Arpit and Kamlesh. Yeah, thank you so much, sir, for initiating the discussion. And as you have rightly pointed out, sir, we are, if you see the growth rate, yesterday only we were told, and the growth rate with which India is growing, almost like 8 to 9%. Even China, though they are number one, their growth rate is only 2 to 3%. So that way, and coming to Odisha, that is again a happy news that last year our seafood export, the production and the growth rate is number one in India, though Andhra is number one in the production, but we are, the rate of growth is number one. So this is, and other than that also the fish as health food, that's what it is getting percolated through the population and more production. So that is where we need to target. Now I would request our Narottam sir, Dr. N.P. Sahu sir, he is the now the director of ICR CIFE, and sir has I think entire the nutrition experts all over India. If you see, everybody have been produced from that institute and SAR's organization. And SAR will be interested to show something, some data, like how the, what is the way forward, how that industry will be catered by the student and what is the requirement and all. It will be very interesting. Very good afternoon, all of you, and most respected Dr. P.C. Thambas present here. Sir, I met you 2017 when in this hall only. Today also I am finding that in the same state. So thank you very much for this lecture, Dr. Karna Sagar, all the industry friends here, Dr. Gopal Krishnan, Dr. Kadal Chakravarti, Dr. Panigrai. Actually, I wanted to give some data. This is meant for all the student entrepreneurs. Students, you are always busy with your mobile. Please see this data, it will be helpful to you and to the industry also. Because today we are discussing about the fisheries, which we are thinking that now the industry should come forward so that this sector should go forward. So why industry should come forward and how, what is the role of the student entrepreneurs, what is the national scenario, international scenario, and what should the strategies. See, some of the data I have collected better, I will think that I will share with you. So this is the paper clipping I have taken on 4th July, it was published. You know that in the Indian standard, that how much protein they are taking, you see that the measure of the protein you are taking from the cereals, that means rice and wheat, which is not a good quality proteins. Generally, it is told that at least 1/3 protein should come from the animal protein sources, then only we will maintain a good health. So, but interestingly, even if the first one is 2023, the next one is 2024. But difference is that you will find again, it is coming down, people are consuming less cereals, means less protein, then they are consuming more, Okay. So, आमे आमर जो प्रोटीन पाई डिपेंड करूँ ये मेनली भात और रोटी उपरे जेटा कि प्रोटीन टा नॉट गुड क्वालिटी प्रोटीन नुहे एबे गोटे वर्ष डिफरेंस देखंतु माने यू विल फाइंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट सीरियल इनटेक कम डाउन सब लोग माने समस्त कहउछन आमे भात रोटी कम खाइबा कि प्रोटीन बढ़ेबा एंड यू विल सी दैट इज द एग फिश मीट एंड अदर प्रोटीन सोर्सेस इट इज इंक्रीजिंग. Okay, so then if you projected 2047, where we are desired that India will be the developed country, by that time this is projected, cereal foods will come down. Cereal and bhato roti कम है जो सबुटे बढ़िया ये अधिका production of annual protein meat, fish and eggs. That means this sector
demand for fish meat will grow very high in the future by 2047 when our country will be a developed nation. Sorry. Okay. So now coming to this, how this sector is growing. Coming to the fishery sector, you see, by 2011-12, 4% agriculture, the contribution of fishery was 4% to GBA of the national agriculture GBA. Now 2023-24, it is 7%, it's almost double. Coming to the, compared to the agriculture, so it was 18.5% in 11-12, now it has come down to 14.7%. Now question comes, it's a very general question, whether going down of that contribution of agriculture to national GDP, whether it is desired or undesired. कम हो रहा है, desired or undesired, because this agriculture sector is coming down, the contribution to GDP, but the industry and service sector is increasing. If you see that it is desired, that for it to be a developed nation, our GDP from agriculture should come down, rather it should increase from industry and service. Why? So I propose that this should be taken by the student entrepreneurship. And if you compare the agriculture GDP from 1945 after independence up to 2023, it is coming down 50 to 40, now it is 14%. Do you know that India to be developed country by 2047, it is desired to be 6 to 7%. Because by 2047, to be a developed nation, per capita income of Indians should be 12 lakh rupees. From this almost 2 lakh rupees to 12 lakh rupees. How it is possible? So how it is possible? That means in the agriculture sector, till in India, 45% population are employed. So what do we want? That Indian, the 45% population should be reduced to at least 15%, so that less 30% should be diverted to industries. So per capita income should reach 12 lakh rupees. That is possible when there is a mechanization of agriculture. So we want that agriculture should be mechanized, so that our employed people should be diverted to other sector, so that per capita 12 lakh rupees will be possible. Now, what is the contribution of fisheries? You see, continuously it is going up and up. That is from 0.8 from 1947, it is 7.1% to 2023. Now, giving an example, then what is the GDP from the agriculture from the developed countries? You see, all the developed countries, the contribution is less than 2%. So that's why I told that it should go down, but the contribution from the industry should come up. So that is how that industry in the India should be a developed nation by 2047. Now coming to, okay. I'm giving an example of why industry should be closely associated with this sector, the growth of the fisheries. I'm giving the example of the poultry sector. The poultry sector has grown to a very good extent that why the association of poultry has taken this ride from 1980 to 2020. So you see the development. Poultry populations for 400 times. Broiler meat productions 1700 times. Egg productions 1300 times. Per capita availability from 104 eggs to more than 5 times. So this is the way how it is growing, only because this industry is involved in the poultry sector. But in case of fisheries, industry involved was only in 2020, only 4 or 5 years. That's why the involvement of industry is now required, so that after 10 years, the fishery sector will be leading sector, and for that student entrepreneurship will play a major role. Then how it is possible? How to ignite the student entrepreneurship? It is charge. I call it charge. What is charge? Charge means it is creative, hungry, adaptive, resilient, gritty, ethical, and decisive. This is possible by the students. Students' entrepreneurship, if it will come forward because they know the industry, they know the science, then it is possible. So why it is required? Because for any development of the industry, research, innovation, entrepreneurship, and industries, all are interlinked. Research they are doing, they know the knowledge. So innovation, that is applied for the solution, and entrepreneurship, that is by the student. And industry that support the students. That is the reason why this research, innovation, and entrepreneurship will be interrelated.
Now, the example is the top countries where the student entrepreneurship are more. You see the United States is the top. India is 17% because now only because the Startup India program, the population is, the percentage is 17%, that's good. But all other countries, who are the developed countries, the student entrepreneurship's contribution is much more. That is the reason why now we should that encourage our students that they should go for student entrepreneurship so that this sector will grow. Now coming to that total, dividing the total world, South Asia is leading for the entrepreneurship. Now, I'm giving the example of what is the startup density of the different countries. Israel, you know, that is Israel high-tech country, small country, but the technology is very high. You will find water, less water, more fish. So this technology, you see that contribution of the students. They are at least 4.5 students per 1,000 students, 4.5 going for the industry or entrepreneurship. Similarly, in India, you see 2.6. 2.6 also not bad. There is 2.6 students per 1,000 students, they are coming forward for the student entrepreneurship. Now coming to that university students who intend to become the entrepreneurship. University students immediately after 5 years, only the developing countries, they are coming forward. But who are developed countries, they are coming later on. But you see India position is in between, just in between. That means India is in transit phase. India is preparing to go to be a developed country. So that's why the Indian students should think forward, going for the student entrepreneurship. Then what the research, what our past in aquaculture, it started from 2000, before 2000. It was not an entrepreneurship at all. It was traditional aquaculture. Then 2000 to 2010, it is early commercial phase, and 2015, it is the companies, just like AquaConnect, small-scale feed innovator, they entered into the business that I told 2015 only. That means maybe 10 years back. Now 2015-20, it is Startup India mission started, where it is stimulated the growth of student entrepreneurship. And so many companies were there, and 2022 present, due to COVID only, it was blessing in disguise. More student entrepreneurs were there in this field. Now coming to which are the different areas the student entrepreneurship they go for. Number one choice is feed section. Then number two is RAS system. Number three, ornamental fish breeding. 4, value-added fish product. 5, fish digital platform. 6, biofloc technology. And health products, cold chain, seed productions, and aquatourism. These are the areas in sequence where the student entrepreneurship are growing. Now coming to the different regions, what are the factors affecting the students should go for this student entrepreneurship? This is the self-confidence, number one. Then education factor, whether it is there in the curriculum or not. So in this context, I will request all the deans that it should be the part of the curriculum so that students will be take. CIP has already initiated 2 credits in the startup program in the curriculum. Then institutional support, that is incubation unit, financial access, that is market factors, social environment, government policies. These are some factors where the students they take the decision to be the student entrepreneurship. Now, how to promote student entrepreneurship in fisheries? Number one, as I told, it should be part of the curriculum. Number two, incubation and mentorship. Now it has started. That is, I want to say that this year the CIP got the Center of Excellence in that is National Incubation Center for Fishery Entrepreneurship Development. So we are also inviting all the students from across the country, so who are having the innovative idea, we can support with the seed money so they can go for entrepreneurship. Then funding incentive should be there that we are doing, and exposure to ecosystem. That means they should have a business or they should have their friends, everything they should be doing it, and institutional support. And coming to the professional, who are the different professionals they are engaged in this business, fishery business. Fortunately, fishery graduates are 15 to 20%, it's more. But more than that, engineering graduates are doing 30 to 35% business only because now this IoT, everything, they are going to be integrated in the different business model. That's why the engineering people having that background on this IoT and mechanical engineering, they are coming. Then management graduates, biotech graduates, veterinarians, financial commerce, and all these people are there for the student entrepreneurship. So what is the background? The fishery and aquaculture students, what they are doing? They are doing the core technical founder, hatchery, feed, farm designs. Veterinary animals, they are going for health products.
engineering technology, design of the IoT sensors. Then business MBA students, they are going for handle strategy, finance, scaling, marketing. Biotechnology, life science, their product development. Food technology, also value-added fish product. Environmental science, sustainable aquaculture, water reuse. So these are the, and IT people, these are different background which is helping, or whenever you are going to make a group for a business venture, these are the professionals may be helpful to you. Coming to the, what is the most of the startup, generally it is told that about more than 90% startup are failed. Why it is failed? Number one is no market need. So you enter to the market without knowing what is the real need of the market. That is a failure. Running out of case, you don't have money, but you have jumped in the business. That is a failure. Then poor team leadership. You don't have leadership, but you wanted to be a leader. Then weak business model, that is also leads to failure. Inactive marketing, stiff competition, product issues, ignoring customer feedback. So these are the different challenges that you have to consider to be a good businessman. Now, then what is the learning from the failure? You see this, Ritesh Agrawal from Odisha itself, OUAT rooms, from their failure only they have rebuilt themselves to be a successful entrepreneurs. These are other examples I have given. I am going fast because the time slot is given very less. So these are the different aquaculture startup in India. These are successful aquaculture. These are the AquaConnect, Aquaculture Exchange, Captain Trace, Aqua Blue Global, Roveka Technology, Norak Aquatech, Fresh to Home, Aqua Agri, even Lysios is also there in fisheries. So these are the different successful business ventures in India till now and is increasing. So what are the challenges? Number one is lack of awareness or guidance. Just like we are now guiding the students that you should go for business, then only you should come. That the students don't have any type of awareness, or even also industry should to take the proactive role. The students should go for entrepreneurship. Fear of failure of job insecurity. Tomorrow, Carl kya hoga? More business chalibo ki na chalibo sei dara samasta bhitar rohuchi. Then inadequate early stage capital. Who will give seed money? You don't have, nobody can believe on you, your performance. Even bank also they ask for so many, that is documents. The limit interdisciplinary discipline. You know that when we are going for so very strict boundary of discipline, we don't have any connection. If you are going for pathology, you don't have a connection with aquaculture. Aquaculture don't connection with fish processing. So that type of strict boundary, it should be open. Then what are the key skills? Generally the industry, the friends are here, they demand that this type of skill should be there from the students so that they will happy to welcome them in the industry. What are the skills? Business and strategic. They always talk about the technology, but also you should have some knowledge on business and strategic. Then number two, technical and domain, sector-specific knowledge. Suppose aquaculture or digital tools, some sector-specific knowledge you should have, then only they will invite you to the industry to complement them. Innovation, creativity, you should be innovative. Then communication, soft communications, leadership management, adaptability, networking, collaboration, digital technology. So these are the some of the technology that, these are the quality which industry wants. Now, I have summarized the total technology available by or developed by different fishery institutes, research institutes of the ICR. So I have divided into different areas, and the details is available in the souvenir articles. You can follow it. What are the different technology available? I think that I have tried to compile all the information together. It may not be complete, but whatever possible to collect, I have compiled it. In feed development, it is 29 technology by different ICR institute I have given. Fish health, it is 30 technology. Extension technology is 14, biotechnology is 3, aquaculture technology 21, aquatic environment management 6, key technology developed by ICR Fishery Institute, it is 25, and genetically improved variety now we are talking about variety, it is 7. So total 135 technology are developed by different ICR Institute of ICR Research Institute. Now any student wants to have any type of business, at least 135 technologies are available with you. You can go to any institute, discuss with the scientist, and you can start your business. This is the position now at ICR Institute. Now then the last slide, that what CIP has initiated for the student entrepreneurship. Number one, Fish Swat. You might be knowing that the Fish Swat we have initiated 3 years back. Now I am happy to announce that almost every colleges, they are going with the Fish Swat type of program every year. Now that introduced 0.2 credit.
As I told that it should be the part of the curriculum. We have already introduced 0+2 credit in our curriculum. Students interested for going for the startup program, entrepreneurship program, they will be provided with a mentorship, one industry mentorship, and they can go for any type of business. Then think that for student entrepreneurship, that means that we are inviting the innovative idea from the students, and we are giving them seed money to go from the lab to the market. This type of ventures we are promoting. A day with industry. Last year we have started that we are inviting the industry to our institutes, and they are interacting with different divisions. One division, one day. They will have their interaction with the industries. Industry are listening to the innovative idea. They are also rewarding them. Last time, the industry from their own side, they have given 10,000, 20,000 rupees to the students for giving a very good innovative idea. Then fisheries stick. Again, it is an innovative idea that we have invited from the very wild idea, that type of, that we are taking for the students. If it is not required today, tomorrow it will be helpful, that idea. Market-ready innovators. We are inviting the students who are ready to go for marketing. We are providing the seed money. Then CIP Incubator Center, as I told this year that the Center for Excellence in Fishery Entrepreneurship Development, CFED, that we got 2.68 crore from the NFDB. This is a good support, so that we want to promote the student entrepreneurship from this year onwards. Then recruitment fair. Last time also, first time we have conducted recruitment fair. 40 companies, they have come to CIP, and 300 students, all over the fishery colleges of the India, they were there, and they recruited at least 70 students. Some are here also from IB group. They recruited 22 students, and the students, students from different, those who are remotely placed in different. They are so happy because the company could not go. They are unable to reach the college. Now, when they are coming to a common place, they are also equally benefited by getting a job. So this is the type of thing what we have that is initiated from CIP. So with this, I wish that from classroom to boardrooms, you should have your own company, and for the student entrepreneurship for develop India. Dhanyavad. So I think that this will set a tone for the students, industry, everything. To raise some questions, we will take some questions also in between. Thank you very much. Thank you for giving this opportunity to the organizers. Thank you, sir. Actually, एटी आमे समस्ते उड़िया रे ठीक से कही होबनी, but sir was जोड़ा कहूतिले जे आमर जेमती प्रोडक्शन बहुत बढ़ाइबार अछि एई ब्राकिश वाटर आमर चिंगुड़ी क्षेत्र रे आमे एबे जो 10 लाख मेट्रिक टन करूचंती ता 20 लाख पर्यंत जीवा 1 लाख करोड़ टार्गेट अछि सेमती आमर फ्रेश वाटर रे भी 20 मिलियन मेट्रिक टन को 40 मिलियन मेट्रिक टन ले पहुंचेबार बची ता पई कि जो ह्यूमन रिसोर्स जो छात्र छात्री माने दरकार ए बलिया कॉलेज रे आ जो स्टार्टअप प्रोग्राम दरकार सेही प्रोग्राम गुडा केमती करी हबो सेही विषय रे कहूतिले किंतु मु अनुरोध करबी हमर पैनल को जो माने उड़िया रे कहि परिबे बा हिंदी रे कहि परिबे प्लीज स्पीक इन उड़िया और हिंदी एंड दोज हु कैन नॉट देन वी विल ट्रांसलेट ट्राई टू ट्रांसलेट आ वर्तमान हमर आम संगे आउ जने एमिनेंट साइंटिस्ट अछंती डॉक्टर काजल चक्रवर्ती सी नेशनल जेनेटिक ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसर्च सेटा अछि लखनऊ रे तार सी अछंती निर्देशक आउ तांकर बहुत अवदान अच्छी फिशरी क्षेत्र में अनेक गुड़े टेक्नोलोजी पेटेंट सब से बाहर करछंती से दीपद आपण सामने रखिए. Thank you. Very good afternoon to all of you, and most respected chair on all Dr. Sahu, Dr. Panigrahi, all industry friends sitting in on the dais. The fisheries doyen, I can see Professor Karunasagar sir, Professor Thomas, I can see Dr. Kissan there, so welcome, and all of I think many friends and colleagues there. So it is nice because today's I think theme is envisaging blue transformation in India, Indian fisheries and aquaculture. I think if you go for blue transformation, is very important is that seed, because basically fisheries, quality seed, then quality feed. Feed should be very important, and of course after that it comes like a processing. It has to be processed properly, like harvesting, health and harvest. It should be intricately related. And then of course export and business. See, ultimately if it is not, business is not there, it is not going to public, then our research is meaningless. So it's very important. So I think if you, these are the different pillars of the blue revolution in fisheries. I think it's very important to follow this sequence. And of course, this basically here the industry partners are the heart and soul of our
today's program. And and Dr. Shahu has already mentioned in very detail, so I don't want to go too in depth. But some of the things, I think our institute where I have earlier worked, I think here my industry friends are there from Abyss and most of the technology. So we believe strongly that whatever research we do it in laboratory, until and unless it goes to the field and it's not being utilized by the farmers and stakeholders, it is of no use. So it's very important, and we will be willing to hear from you. I think many areas, I think it's better to hear from them first. And while hearing them, I think you can also interact, we'll also interact. I think that will be nice. So I'll make my things short, and in between we'll talk. I think, thank you very much. बहुत धन्यवाद काजल sir, and I also take this opportunity to welcome Dr. Kissan Pandian from BOBP. BOBP Bay of Bengal program amar gote achi tar निर्देशक आम संगे आसी जॉइन करचंती. वेलकम sir. And एबे आमर एठू आमर पास आउट हेतिबा जणे एबे वर्तमान एंटरप्रेन्योर ओडिसा रो आ से बलांगीर ओडिया जगह रे जोटी पानी रो बहुत अभाव ता भितर से फिश हेचरी करी बहुत चाषी को उपकृत करचंती. चलंतु तांकटू किछि सुनिबा. थैंक यू. Jai Jagannath, respected dignitaries, many of the senior people here are my teacher, not only in academic way, even in my in the journey of my success, many seniors are also there. They have also taught me very wonderful things which helped me to grow in my life, and even I can transport those ideas to farm, and not only me, my farmers are also benefited many of the times. Myself, Mr. Sapan Kumar Patra, I am a graduate from this college of Fisheries, Rangalunda. Again, I have done my masters in aquaculture from CIFE Mumbai. Now I am operating one carp hatchery at Balangir in Odisha, named Saban Fish Seed Farm, started by my father. And now I am looking after the hatcheries, and even I am giving consultancy to many of the aqua farmers in that area, even in throughout the Odisha state and nearby states also. And we are providing A to Z solution for fish farming and fish marketing also. सपन हिंदी या ओडिया में बोलो. Odia, okay. I'll speak in Odia. If many of there who cannot understand Odia, I will be mixing Odia and Hindi. ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟପିକ୍ ନେଇଛି ଆଜି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍, ଆମେ ବହୁତ ସାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ. ଏଗେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ରହିଛି ଫାର୍ମର୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ, ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି. ସାର୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ତ ଫିଲ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ସ, ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇଛୁ ଆମେ, ଯେମିତିକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି. बहुत सारा फिशेस डेवलप होती. गोटे फिश जयंती रोहू, अमृत काटला, अमूर काप, आमर प्रीमियर इंस्टीट्यूट गुड़ाक सिफा एंड अदर इंस्टीट्यूट से डेवलप किंतु तार जो गुडविलटा जो तार प्रोडक्टिविटीटा जो फार्मर एंजॉय करें, आम तार गोटे पार्ट बनीचु. आम गोटे मल्टीप्लायर यूनिट बनीचु, एनएफडीबी सपोर्टेड प्रोग्राम, एनएफएफबीबी जो ब्रूड बैंक नेशनल ब्रूड बैंक अच्छी आम कौशलेगांव भुवनेश्वर में, सहित आम एमएमयू अच्छी. आम इम्प्रूव भेराइटी मल्टीप्लिकेशन सेंटर बनीचु. एगेन आम से इम्प्रूव भेराइटी जो गुड़ाक रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप होती आम फार्मर मान पाखे पहुँचाऊँ. एगेन फार्मर मान कौन रेस्पॉन्स अच्छी मुझे गुड़ाक मोर स्लाइड्स रे कहबी. Next. What is genetically improved variety? कौन जो गोटे सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम रे आमे डिफरेंट स्ट्रेन्स रो फिशेस नहीं करी गोटे हायर गोटे गुड क्वालिटी जो गुड़ा इम्प्रूव्ड स्ट्रेन गुड़ाकर आम जमी डिजीज रेजिस्टेंस होगला, हाई ग्रोथ वेराइटीज होगला, से गुड़ाक नहीं इम्प्रूव्ड वेराइटी जोड़ा को आम साइंटिस्ट मैंने इंस्टीट्यूट रे डेवलप कर ब्रीड गुड़ाक इम्प्रूव वेराइटीज कहुए. सेमती फिश रो गोटे 3टा वेराइटी आज मु जोड़ा आम मल्टीप्लाई करके अन्य फार्मर्स मान को दौचु तार उपरे मु हाईलाइट करी. व्हाट आर द कैरेक्टर्स? नेक्स्ट.
ऑलरेडी मु कहि सारछि जे हमर कोलैबोरेशन अछि एनएफडीबी सहित आउ आमे इम्प्रूव्ड वेराइटी रो सीड्स जोड़ा कि सिफा रे डेवलप होइछि आउ बेंगलोर रे जोड़ा अमूर कार्प हमर गोटे इम्प्रूव्ड वेराइटी रो कॉमन कार्प ताको आमे प्रोपागेशन करिकि आमे फार्मर्स को ये करछु प्रोवाइड करछु इट्स ए लैब टू लैंड प्रोग्राम एक्चुअली इम्प्रूव्ड काटला जार ना वर्तमान दिया जाइछि अमृत काटला तार रेस्पॉन्स केमती अछि फार्मर फील्ड रे मु जस्ट कहबी तो बेटर ग्रोथ अछि नॉर्मल काटला रु एटा गोटे डेफिनेटली बेटर ग्रोथ परफॉर्मेंस अच्छी तार डिजीज रेजिस्टेंस अच्छी इवेन आम फार्मर फील्ड रे भी आम ऑब्जर्व करूँ सीड प्रोडक्शन कला बेले आम मेनली सीड प्रोडक्शन करी थाउ तो सीड प्रोडक्शन कला बेले जो गुड़ाक चैलेंजेस थिला नॉर्मल काटला रे केतेटा क्षेत्र रे गुड़ाक केते एरिया रे आम बेटर सीड डिजीज रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करिछु एथरे जोटा कि इवन डिजीज रेजिस्टेंस जदि हो गला तार बेटर डेफिनेटली तार बेटर सर्वाइवल रेट रहिबो एवं ग्रोथ भी भल रहिबो जेतेबेले फिशटा डिजीज फ्री रहिबो टोटल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रोथ एनर्जी एंड आमे बेटर प्रोडक्शन पाई परिबा तो डेफिनेटली आमे काटलारू बेटर ग्रोथ ऑब्जर्व करिछु अमृत काटलारू नॉर्मल काटला अपेक्षा एगेन जयंती रोह रे आमे 17% रु 20% पर्यंत बेटर ग्रोथ ऑब्जर्व करिछु आ गोटे जे मेनली गोटे एरोमोनेस रो इन्फेक्शन रही था जयंती रोह रा सीड टाइम रे तो सही जयंती रोहू आम इंट्रोड्यूस कला पर जो नॉर्मल रोहूर एरोमोनास इन्फेक्शन थिला सीड कल्चर टाइम रे एवं सीड्र प्रोडक्शन सर्वाइवल को कमाई दूला एवं द स्पॉन टू फिंगरलिंग हेबार जो पीरियड थिला सेटा को आमे रिड्यूस करि परिछु तो बेटर प्रोडक्शन आमे निश्चय आमे जयंती रोहू करि परछु इवन इन द फार्म फील्ड ग्रो आउट पॉन्ड रे फार्मर माने 17 to 20% हायर ग्रोथ रेट ऑब्जर्व करछन्ती जयंती रोहू रे से आम जयंती रोहू गोटे ब्रीडर सैंपल अच्छी मु देखा 10 to 20% हायर ग्रोथ रेट अच्छी डिजीज रेजिस्टेंस होची साइनी कलरेशन इज ऑल्सो डिफरेंट इन द ओडिया मार्केट ओडिया पीपल लव रोहू आउ ये गोटे जयंती रोहू गोटे हायर ग्रोथ भेराइटी हो फार्मर माने इजीली ताको कल्चर करके इवन 4 to 6 मंथ रे से माने जदि इयरलिंग कल्चर करछन्ती 4 to 6 मंथ रो शॉर्ट पीरियड रे से माने मार्केटेबल साइज प्रोडक्शन करि परिबे 600 to 1 kg 600 ग्राम टू 1 kg साइज रो वेरी शॉर्ट पीरियड रे करके भलो बेनिफिट भी तो कमाई पारुछन्ती फार्म फील्ड रे अगेन रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द जयंती रोहू इज वेरी हाई नॉर्मल रोहू रे हमें 1.5 लाख रु 2 लाख पर केजी फैकेंडिटी पाउथलु जो स्पॉन रिकवरी पाउथलु किंतु जयंती रोहू रे मु फील्ड रे ऑब्जर्व करिछि वी आर गेटिंग अप टू 2.5 लाख पर केजी बॉडी वेट फीमेल रो जो एग्स आसे हैचरी रे अप टू 2.5 लाख पर केजी बॉडी वेट तो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस भी हायर अच्छी आम जयंती रोहू रो आम फार्म फील्ड रे ऑब्जर्व करिछु एंड अमूर काप इट्स ए सिलेक्टिव प्रोग्राम डन बाय डॉक्टर वाई बसवराजू यहाँ गोटे अमूर स्ट्रेनटा आसी अमूर रिवर रु कमन काप्र गोटे स्ट्रेन जोटा कि बेटर परफॉर्मेंस दूची द डिफरेंस बहुत गुड़ाक नॉर्मल कमन काप्र आर बहुत सारा डिफरेंस अच्छी जोटा कि आम डिटेल्स आम जीवानी बट हायर ग्रोथ रेट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस अमूर कार्प एंड तार मेजर पार्ट रही है कि ये 1.5 ईयर मेच्योर करे अगेंस्ट द नॉर्मल कमन कार्प जोटा कि 6 मंथ रे मेच्योर कर जाए कल्चर सिस्टम रे इट टेक्स अराउंड 1.5 ईयर टू मेच्योर सो द डेवलपमेंट द एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रोथ पार्ट ऑफ द फिशेस इज मोर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जितेबाला होता है तो नॉर्मल मस्कुलर ग्रोथटा कमी जाता है तो 1.5 इयर्स जितेबाला आपको रिप्रोडक्शन आर मेच्योरिटी एज अच्छी इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर बिकॉज से ग्रोथ एनर्जीटा टोटल फार्म फील्ड रे ऑब्जर्व करता है इवन फ्रेश फिंगरलिंग और ईयरलिंग दे कैन ग्रो अप टू ए साइज अप टू 1.5 to 3 kg इन ए ईयर दे कैन ग्रो this fish for the table fish production in their culture system and delayed जो reproductive performance रहिला तार आउट एडवांटेज रोचे यार दे इजी टू हार्वेस्ट नॉर्मल कॉमन कार्प टेंडेंसी था कि दे एस्केप फ्रॉम द ड्रैगनेट नॉर्मली पॉन्ड कल्चर रे पीपल यूज ड्रैगनेट फॉर हार्वेस्टिंग जो जाल आम व्यवहार करता किंतु नॉर्मल कॉमन कार्प दे एस्केप फ्रॉम द ड्रैगनेट तो लार्जर वाटर बॉडीज रे रिजर्वर्स रे larger ponds रे it is difficult to harvest that fish but amur carp is easy to harvest that's another advantage with the amur carp and
आउट एडवांटेज रहता है कि द कॉमन कार्प हैव ए हैबिट ऑफ डैमेजिंग द डाइक्स इन द पॉन्ड हिडटा को आमर नष्ट कर दियंती तो यही अमूर कार्प कल्चर रे सेटा टिके नॉर्मल कॉमन कार्प रो बेटर रहता है दे डो नॉट डैमेज द डाइक दैट मच and that is the another advantage what we observed in the culture field. Farmer response achi up to 30% higher growth rate they are observing with Amur carp, so that definitely they are getting a better profit from the Amur carp culture, and the body shape is also different from the normal common carp. That's another because place to place the taste of the taste bud of the people is different. तांकर स्वादटा अलग थाए तो कौ माने कौ माछ पसंद कर केते जण एरिया रे रोहू माछ पसंद करथांते केते जण कॉमन कार्प पसंद करथांते पर्टिकुलरली इन वेस्टर्न ओडिशा पीपल लव कॉमन कार्प सो अमूर कार्प रो एडाप्टिव लोक बहुत जल्दी ताको एक्सेप्ट कले मार्केट रे एवं अमूर कार्प इज ए बिग हिट इन आवर एरिया. This is our success story what we have achieved with the genetically improved varieties of fishes which is actually developed by the lab, but we are helped them to reach to the farmers, and farmers ultimately get the benefit out of that. Thank you. Thank you so much. Yeah, really congratulations. एते successfully success story समस्तन कहि परलो. आपरे हमरो एटिकार son of the soil हमरो अछंती कामेश्वर राव जी. Jaideep कहतु आपण inspiring talk and tell also about your pathway, your journey. आपण केमती जर्नी करी कोठी पहुंचंती आउ सारंगर एबे एठी मिनिमम 5टा कि 6टा हेचेरी and he is giving so many people quality seed and the native species also this monodon and all still he is continuing along with Benamai and all. Sir, please. समस्त पर नमस्कार मंचासीन ज्ञानी विज्ञान मान को नमस्कार और मोर सीनियर भाई मान को नमस्कार और स्टूडेंट मोर धन्यवाद आप शुणापी तो किए नहांती क्या कह स्टूडेंट मान जार भविष्य गढ़ापी एत बड़ मंच तैयारी करागला से मैंने छाड़ी पलाउंट अत्यंत लज्जाकर कथा आपण मैंने भविष्य गढ़ापी भविष्य भल रही आपड़ ये पाठ पढ़ुंट पाठ पढ़ा भविष्य निर्धारित करने देश विदेश दूर दूर आसी पहुँचले तुम मैंने धीरे पलाउच चाषी भाई भोक लगे मत पलैले चाषी भाई मैंने आउ मोर परिचय मो के कामेश्वर राव चुंगुड़ी जाँल हेचर मालिक मत कहवाई डाक हेतु यही परिकल्पना सभार जो मैंने ऑर्गेनाइज कमिटी अच्छा धन्यवाद अर्पण करुच्ची. मोर कहया कथा है यही जो आम करुचे यार भविष्य अच्छी ना नहीं. आज जो आम पाठ पढ़ुचे फिशरी यार भविष्य अच्छी ना नहीं तो भविष्य विषय समस्त कहले टिके निके करी मु टिके कहूची बेसिक जदि भविष्य अच्छी ताल तुम कौन कर चाकरी कर ना तुम चाकरी दब जदि चाकरी कर भविष्य किसी ना जदि चाकरी कर जो 30 वर्ष चाकरी कर 30 वर्ष तो अन्य तो मासक 1 लाख टका पाइब तार 50,000 टका खर्च पड़ेब बड़का हम 50,000 टका वर्ष को केते 6 लाख टका 30 वर्ष रे 1,80,000 जगह किणले 1,80,000 फ्लाट किणले 1,80,000 चाकरी करी कहीं करिबो कौन जदि चाकरी किसी लोभ हो लांच खाइब रिटायर्ड हबार 2 मास पर तुम विजिलेंस धरद तब तो चाकरी करियो कहीं चाकरी एपट बाधा सेपट बाधा डरी 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 मरिया छड़ा किछि ना. आमर भारत वर्ष रे 7,500 किलोमीटर समुद्र पड़ी आम वर्ष वर्ष ग्रो करुचे मिलियन मिलियन में टन बाहर देश को रप्तानी करुचे कि चाषीर अवस्था सुधरला कि मु चुंगुड़ी जाल दौची मोर चाषीर कथा मु जाने जदि 100 काउंट चुंगुड़ी धरब तार खर्च सहित 200 टका हो लाभ कौन फीड वाला 100 टका नहीं जीव मेडिसिन वाला केमिकल वाला नहीं जो 50 टका
दरमा आउ 50 टंका ता बड़काला कौन से कहीं चाष कर चाषर अवस्था सेमिति देशर टनेज बढ़ुथो कि चाषी किछि लाभ नहीं तापाई गोटे चिंता करा जाऊ ताको सब्सिडी आकार हो ता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केमिति कमिबो फीड रेट केमिति पड़ियो कमियो जाळ रेट कम जाई आज्ञा आमे 50 पैसा बिकुतले 15 पैसा पळाइलु जाळ रेट कमिला हमर किसी दोष नाही एबे दोष रही फीड वाला करंट सब्सिडी पाइबो कि नाही केमिकल वाला केमिकल नहीं कि ठकुचंती ताकू केमति रक्षा कराबो ए मंच निर्धारित करिया पड़िबो चाषी मान भविष्य निर्धारित करिया पड़िबो मु स्टूडेंट मान गोटे कथा कहूँ एथिरे भविष्य जदि चिंता कर बहुत भविष्य अच्छी बहुत भविष्य अच्छी गोटे कथा कहबी सबुठू आम देश रे बड़ चाकरिया किए आईएएस आईएएस तो तापर अच्छा साइंटिस्ट में अच्छा काम कर आईएएस चाकरी तुम कर कौन गोटे बुढ़ पचारा भाई सब गोटे बुढ़ा को बापा नमस्कार करता है जब आईएएस टी पाइले से नमस्कार कला बुढ़ा डाकिला बाबा तू आस ये आसला पहुँचला कौन ला जे सी कहले तो कहली कौन करूँ ना मुझे कलेक्टर हो जहाँ चल ता करू तू किसी करूँ देशर कानून नियम तैयारी करने लोकसभा राज्यसभा अच्छी सभापति अच्छा प्रेसिडेंट ताकि निर्धारित कर तार तोर कौन योगदान अच्छी कि ना आसे स्टेट विधानसभा अच्छी ताके नियम कानून तार कौन तोर योगदान अच्छी ना आसे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट रे जो माने एमएलए एमपी अच्छी तांका आगे तू कुछ कही पारू कुछ कही ता तलुक आसे कोर्ट कचर अच्छी ताठू कौन उद्धार कर ता तलुक आसे जो माने रिपोर्टर मान अच्छा सांबादिक से माने आगे तुम औकात कौन किछि ना जो माने फाइनेंस कर पॉलिटिशियन छिड़ा कर बेपारी आगे तुम कौन किछि ना ताल बेपार करिया कि नहीं बेपार करिया कि नहीं वाणिज्य अवस्थित लक्ष्मी बेपार बहुत फ्यूचर अच्छी आमे जो अच्छे सबुठार बेस्ट प्रोटीन वर्ल्ड रो से होचे माछ और चुंगड़ी भाई कैलिफोर्निया रो मंजी बिकुचंते ता कहते ड्राई फ्रूट्स ना मंजी काजू मंजी ना फल मंजी को फल कहीं बिकी दौरान अंगूर फल किसमिस फल मंजी कौड़ फल है तांके हाई प्रोटीन कहीकि वालनट आलमंड पिस्ता बिकी दौरान प्रोटीन कहीकि और बेस्ट प्रोटीन सोर्स होचे माछ आमे माछ बेपारी करि परिबा कि नाही बेस्ट प्रोटीन देगी परिबा कि नाही सब बेस्ट प्रोटीन आम पाखे अच्छी सोर्स अच्छी करि परिबा करिया गले ह्यूल पावर दरकार ठाण देवा पड़ो आम करूँ हम निश्चित निश्चित हम किंतु डिटरमाइन थी अच्छी मु निश्चित करी करेबी ह्यूल पावर जो अच्छी आने बहुत अच्छी साइंटिस्ट मैंने बहुत रिसर्च कर बहुत स्पेसीज अच्छी बहुत स्पेसीज बैंक वाला राज्य फाइनान्स करने सरकार सपोर्ट कर राज्य अच्छा सब अच्छे केवल आमर मन ना करने कि आणिक देदेव खाईदेव बापार संपद अच्छे बिकिदेवा बापा जब 5 घर रखी स्क्वायर फिट बिकिदेवा बंचीजा बेबस गले गले देखा यही तो चलन मन को दृढ़ करा पड़ो स्ट्रंग हाँ पड़ो करदेवा जदि करवा मन डाउट हो आम तो पाठ पढ़ी बेपार करेला बैंक लोन दब कि ना बैंक दबनी तो बापार संपत्ति ला बैंक दब किसी करें पब्लिक मन आम कहीं देदे आमर इकोनॉमी ज्ञान इकोनॉमी ना आम पैसा थिला पैसा दब अमेरिकार ज्ञान थी प्लान कर बैंक लोन दे दो जीव मोर ये आइडिया अच्छी भाई या हम मुझे रोजगार करें जन चाकरी दे पारि मत लोन दियो देदेव से नॉलेज इकोनॉमी आमर ये पैसा वाला को पैसा कि ना तो कि ना मुझे कह चाहूँगी मंच रे सरकार कही दि जाऊ जे जो माने फिशरी ग्रेजुएट बाहर तांको को अंतत 10 एकर जगह चाष करने गवर्नमेंट तरफ जगह दि जाऊ जदि हेचेरी करा चाहूँचे 2 एकर जगह दि जाऊ विथ ट्रेनिंग सहित
एते एते इन्स्टिट्यूट अच्छी सरकार एते एते टंका खर्च कर क्या आम पाई छात्र पाई कृषक पाई ए समाज पाई आम कहीं तार नहीं पारिबानी आम देश कहीं एते पछ रहिबो आम पछुआ आम एक्सपोर्ट 4 नंबर आम एते मिलियन पठेलु एते टन आमर उन्नति कहीं बड़ बड़े मानकर 10टा बड़ बड़े मानकर उन्नति तांकर लाइन तांको तो गवर्नमेंट को एते टन पड़ले भाई नॉर्मल साधारण लोकर आवश्यकता कौन अवस्था चाषी माने क्वाड़ जीवे स्टूडेंट मान भविष्य ना तो किसी निर्दिष्ट गोटे नियम करा जाऊ गोटे एटलिस्ट जो डिपार्टमेंट पाठ पढ़ुं जमी फिशरी प्लान को किसी जमी दि जाऊ जमी मिलो कि नहीं डाउट बड़ लोक उठे नहीं लानी जमी बड़ ने छान मान मिलनी मूल्य मजुरिया छड़ा किसी मिलनी पाठ बयस नष्टि पाठ पढ़ी बयस नष्टि कम पाठ पढ़ जल्दी बड़ हो बाबा माने हजार हजार कोटी रोजगार कर कि पाठ पढ़ुं आम देश बाबा कहीं एते आ को देश तो ना प्रत्येक साई को गोटे बाबा बाबा कहीं आम देश क्या आम 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 सेमती आम लोटर की विश्वास करुँ पांजी की विश्वास करुँ बाहर 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 अमृत बेला अच्छी ना नहीं ए अंगुठी पिले से लाभ हम हाथ में यहाँ पांच सीता हम आम अंधविश्वास रहा देश जीव कुआड़े ये सब छाड़ मो कहर उद्देश्य है कहीं समस्त सार मान तो कहले भविष्य अच्छी या अच्छी सी अच्छी ए सब मु कहानी कहले कि हेनी एक्चुअली आम जीवा गले कौन कौन अच्छी मुझे कह चाहूँगी तेणु अंधविश्वास छाड़ कुसंस्कार छाड़ पाठ मन दियो पाठ से प्राक्टिकल लिख दियो ये पाठ पढ़ आउ जाए क्या गोटे बंधर काम कर को हेचर काम कर शिखब तुम भविष्य हम जानवनी हेनी तुमको भाव भाई मु एत पाठ पढ़ी साई मो पिला पठ बापा कौन भावुवे पिला जब बंधर काम गला भाव्य कौन किए भाविले कौन अच्छी भाई आमर जदि जान अच्छी निंदा अच्छी जीवन जब अच्छे निंदा अच्छी जो जीवन ना निंदा ना निंदा डरी कम कर आर भविष्य निंदा अच्छी मोर कहर उद्देश्य स्टूडेंट मान आगु बाहर कर भविष्य गढ़ एटी भाषणबाजी करदे काम लगे कथा काम लगे कि डाउट स्टूडेंट मान तो 100 ରୁ 10 जन थे अगर भविष्य चाकरी करदे चाकरी मिलनी आम इंडस्ट्री रे सर हेचर इंडस्ट्री रे और पचारे आप आसिले रवि कुमार पचारे गोटे गोटे इन्स्टिट्यूट जब ट्रेनिंग आपड़ जब गोटे कनसल्टेंसी देवे 3 मास देवे कि 6 मास देवे वर्ष देवे सर आमर इंडस्ट्री 1986 मसीह आज पर्यंत कनसल्टेंसी चलती सर जड़े 10टा हेचरी कनसल्टेंस करे 10 कोटा रोजगार कर टेक्नीशियन एम भविष्य कौन सर एम चाकरी देवे एम देवेनि कहीं सर से कौन पे कर सर नासा साइंटिस्ट जार दरमा 23 लाख 72 लाख सर वर्ष को नासा साइंटिस्ट मैंने बड़ कि सर हेचर जान तैयार करवा जन को 10 कोटी दिया कहीं 10 जन बंटा दिया नजीब सी कहीं 100 जन बंटा नजीब निर्धारित किसी नियम ना जी पाइले से कौन अच्छे सर आप जानते सर सीनियर आप बहुत रिसर्च कर जानते सर प्रोडक्शन करिया के समय लगे के गोटे साइकिल शिखी सर पिलाटी तार भविष्य चाकरी देवे चाकरी मिलबनी सर ना सरकार चाकरी देव ना प्राइवेट सरकार देवे प्राइवेट वाला चाकरी देवेनि निज हाथ में निजर भविष्य तुम निज हाथ में तुम निजर भविष्य तुम कर आगू बढ़ या मोर तुम उपदेश रही नमस्कार धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर जी थैंक यू सो मच जो कहले जो नॉलेज बेस्ड आवर इनपुट बेस्ड टू नॉलेज बेस्ड हमें जाऊँ थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज ही हैज बीन ए इंस्पायरिंग फोर्स फॉर ऑल आवर स्टूडेंट हियर इवन ऑल आवर training program everything he is always free to give any kind of even our whatever exhibition all the animals and all we just tell by phone and he supply everything so now with us another our friend is there Mohammad Hafiz Saab from the Abyss group of company Abyss Export Private Limited please put your points thank you Namaskar, good afternoon to everyone, all dignitary and dais and
Dr. A.K. Das and Dr. B.K. Das and all audience, आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इंडियन फिशरीज आउटलुक के इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ. माई सेल्फ इज़ मोहम्मद आसिफ कुरैशी. आई एम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट AB's Export India Private Limited, and we are manufacturing and supplying fish feed and shrimp feed both. हमारी कंपनी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव ज़िले में है और हम जो है डाइवर्सिफाइड कंपनी है. हम सिर्फ फिश फीड और श्रिम्प फीड ही नहीं बनाते, इसके साथ साथ हमारे पास और भी बिजनेस है, जैसे पोल्ट्री फीड है, हमारे पास डेयरी है, हमारे पास सोयाबीन इंग्रेडिएंट्स जो इसमें लगता है सोयाबीन का प्लांट है, हमारे पास DRB राइस ब्रांड का प्लांट है और ये सारा बिजनेस हम छत्तीसगढ़ से ही ऑपरेट करते हैं. हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फिश फीड की राइट नाउ 4.3 लाख मेट्रिक टन पर ईयर. दिस इज आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी. वी आर द पीपल हु इंट्रोड्यूस फ्लोटिंग फिश फीड इन इंडिया फर्स्ट टाइम. हमारी कंपनी एबीस वो कंपनी है जो हिंदुस्तान में 5 मिनट ओके ठीक है, जो हिंदुस्तान में टाइम कम है तो मैं भी इसको स्टार्ट कर देता हूँ कि मैंने भी प्रेजेंटेशन लाया था पर मेरे पहले भी प्रेजेंटेशन हो गया. सर ने बहुत अच्छा अपना डिस्कशन और सजेशन दिया. तो हमारी कंपनी जो है उस इंडिया में फर्स्ट टाइम फ्लोटिंग फिश फीड का जो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले हमारी कंपनी ने किया था इन 2008 में 1 अप्रैल में, और उसके बाद हम श्रिम्प फीड बिजनेस में आए. वी आर द कंपनी हु इंट्रोड्यूस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फीड. फिश के लिए हो या श्रिम्प के लिए हो, चाहे वो फ्रेश वाटर फीड फिश के लिए फीड चाहिए, चाहे वो ब्रेकिश वाटर फिश के लिए फीड चाहिए, चाहे वो कोल्ड वाटर फिश यानी ट्राउट के लिए फीड चाहिए, या मैरीन वाटर केज कल्चर जो स्टार्ट हुआ है उसके लिए फीड चाहिए. IB ग्रुप वो कंपनी है जो ऑल टाइप्स का फीड बनाती हैं. जो ये था, मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ, इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा सा क्योंकि फार्मर अभी कोई नहीं है ना. तो नहीं वो बैक हाँ. सो वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप्स ऑफ फीड फ्रॉम स्पान टू टेबल फिश, इवन ब्रूडर फीड. ब्रूडर फीड को हमने NBFGR के साथ 2011 से 2013 3 साल हमने कंटिन्यू रिसर्च किया था NBFGR लखनऊ में, और उसको रिसर्च करने के बाद एबीस फिश फीड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में ब्रूडर फीड बनाती है, अदरवाइज़ कोई कंपनी ब्रूडर फीड नहीं बनाती. हमारी कंपनी का टर्नओवर 13,000 करोड़ पर ईयर है. हमारे पास अगर मार्केटिंग टीम कहा जाए जो हमारे पास है, तो हमारे पास मार्केटिंग टीम के अलावा हमने बिजनेस मार्केटिंग के अलावा हमारे पास टेक्निकलॉजी एक्सपर्ट है जो फिश फीड को मार्केट करते हैं, फार्मर को टेक्निकली प्रोवाइड करते हैं, उनको लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं. साथ ही साथ हमारे पास एक रिसर्च टीम भी है. वो रिसर्च टीम कंटिन्यू हमारी प्रोडक्शन कास्ट कैसे फार्मर के लिए कम लेकर आए उस पर हम लोग कंटिन्यू रिसर्च करते रहते हैं कि फार्मर की कास्ट कैसे प्रोडक्शन कास्ट कम से कम जाए और उसकी प्रॉफिटिविटी ज़्यादा बढ़े. साथ ही हम हैचरी में भी रिसर्च कर रहे हैं. हमने इंडिया में जो सबसे पहले तलबिया की हैचरी जो मॉडर्नाइज हैचरी है उसके लिए, और फंगेसियस की हैचरी है उसके लिए भी हमने काम किया है. इंडिया में बोला जाए तो 2-3 हैचरी तो पहले भी थी, पर मॉडर्नाइज तलबिया की हैचरी छत्तीसगढ़ में 2000 हमने 15-16 में डलवाया था टेक्निकली एक्सपर्टाइज सजेशन देके. राइट नाउ अभी हमने बनारस में सर फंगेसियस फिश की हैचरी, जो कि इंडिया में फ़िलहाल फंगेसियस फिश का प्रोडक्शन होता है पर हम डिपेंडेंट है किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, तो हमने अपने एक फार्मर से बनारस में अभी फंगेसियस हैचरी स्टार्ट करी है. इसके अलावा एक ये हमारा था कि कंपनी का क्या रोल है. अगर हम फ्लोटिंग फिश फीड की बात देखें तो फ्लोटिंग फिश फीड जो होता है वो बैलेंस न्यूट्रिशन फिश फीड होता है, जो कि फिश की सीड वाइज, अगर स्पान है तो स्पान, अगर हैचरी फीड, आपका प्री स्टार्टर फीड, ग्रोवर स्टार्टर फीड, ग्रोवर फीड, और उसके साथ कल्चर फीड, और साथ में ही ब्रूडर के लिए हम लोग फीड बनाते हैं जो उसके लिए अलग अलग बैलेंस न्यूट्रलाइज होती है. हम लोग ने इससे सपोर्ट होता है मॉडर्न फार्मिंग के लिए
कि जो भी फार्मर है ना, मॉडर्न फार्मिंग कैसे करे, उसके लिए ये जो फ्लोटिंग फिश फीड होता है ये सबसे ज़्यादा ये रहता है। फार्मर के लिए हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। हमने अपनी कंपनी में एक COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, जिसमें फार्मर को हम हर किस्म की ट्रेनिंग देते हैं, नॉट ओनली टेक्निकल, उनको बजट कैसा बनाए, उसको बिजनेस मैनेजमेंट कैसा करे, वो फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करे, कल्चर मैनेजमेंट कैसे करे, फीड को कैसे डालना है, फीड को कितना डालना है, ये सारी चीज़ एक फार्मर को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग हमारे फार्मर जो हमारी कंट्री में जो उनकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ रही है, इसमें इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि हमको ये नहीं मालूम कि फीड को डालना कब है, कितना डालना है, कितनी क्वांटिटी डालना है और उसको कैसे डालना है। हमने प्रोटीन फीड इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ साथ हमने उसके लिए ट्रेनिंग फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया, न्यूट्रिशनल एडवाइजरी, सपोर्ट टू फार्मर को कौन सा फीड के लिए कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने फार्मर्स लोगों को अवेयरनेस किया। हाई प्रोटीन फीड, इसके अलावा लो प्रोटीन फीड, हाई फैट, लो फैट, फार्मर इकोनॉमी फीड, इसको हमने ये किया। फीडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो फीडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑल ओवर इंडिया है। पेन इंडिया में फ्राम आप देखा जाए तो तमिलनाडु से लेके उत्तर भारत में कश्मीर तक, लद्दाख ले तक हम फीड सप्लाई करते हैं। इधर चाहे तो आप बॉम्बे से लेके हमारा फीड जो है मणिपुर तक, हम लोग अरुणाचल प्रदेश मणिपुर तक हमारा फीड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है और वहाँ पे हम फार्मर भी है और उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं। फार्मर को हम लोग ट्रेस आउट करते रहते हैं कि कौन से फार्मर है वो सही फीड दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है। इसके लिए हमने डिजिटलाइजेशन किया हुआ है और एक ऐप बनाया हुआ है, कोलैबोरेशन है। हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के, सरकार के साथ बैठ के हम लोग कोलैबोरेशन भी करते रहते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम में एक रिसर्च किया था CMFRI के साथ, लकली डॉक्टर काजल चक्रवर्ती सर है जिनकी टीम के साथ हमने सिल्वर पंपिनो कारवार में एक प्रोजेक्ट चलाया था और वहाँ पे सिल्वर पंपिनो के लिए द बेस्ट फीड मैरीकल्चर के लिए वो हमने फीड बनाया था। और राइट नाउ धीरे धीरे फार्मर जुड़ रहे हैं जो हमारे को विशाखापट्टनम और जो आसपास के इलाके में इंडियन पंपिनो कर रहे हैं, वो कुछ फार्मर जुड़े हैं जिनको एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग इसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। साथ ही हमारी रिसर्च टीम है। राइट नाउ अभी हम लोग आर्ग्यूलस जो कि फिश का एक सबसे बड़ा चैलेंज है, उस पर हमने एक डेमो पैड बना के रिसर्च कर रहा है कि आर्ग्यूलस होने के चैलेंजेस क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं, एक फैक्ट्री बनने के क्या क्या चैलेंजेस है, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट को अगर हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप फार्मर के लिए जो बोल रहे हैं वो काफ़ी है, आप बाइंड चलिए ठीक है, तो फार्मर के लिए बोलना है। तो ठीक है, थैंक यू। पॉइंट तो बहुत सारे थे डिस्कशन करने के। हम लोग जैसे सीफे में गए थे लास्ट टाइम और वहाँ पे लड़के भी सेलेक्ट किए थे कि हम मार्केटिंग और इसके लिए कैसे लड़के दें। साथ ही एक हमारा सजेशन भी था सीफे के लिए, हमने उस टाइम भी दिया था कि जो भी बच्चे, जैसे सर ने भी कहा है कि जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं या PhD करते हैं, एक तो जो PhD करते हैं, मैंने बहुत सारे लड़कों का इंटरव्यू भी लिया अपने इसमें, PhD करते हैं ना तो उनको फिशरीज डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं रहता। वो ऐसे सब्जेक्ट पे PhD करते हैं जिसको नॉर्मल फार्मर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा एक एकेडमिक में हमारे पास एक चैलेंज ये है कि हम लड़कों को सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, उसको पढ़ाने के बीच में हम कोई उसको टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं देते। तो लड़का पहले दिन से ही ना कार की डिमांड करता है, आराम की बात करता है, जबकि उसको पढ़ाई 3 महीना पहले सेमेस्टर में देना चाहिए और 3 महीना उसको किसी भी फार्म में काम करते हुए देना चाहिए जहाँ पे वो ना प्राइमरी वर्क सीखे, पानी में जाए। आज हम लोग देखते हैं कि लड़के लोग जो जाते हैं काम करते हैं हमारे यहाँ मार्केटिंग के, वो बंदे लोग के ना एक कीचड़ का छींटा तक नहीं आता। बाहर से आएगा, एक जन को बोलेगा चेक करो, एक जन को बोलेगा पानी लेकर आओ, फिर डिसीज़ बोलेगा, फिर डिसीज़ रिकॉग्नाइज करने के बाद मेडिसिन लिख देगा दुनिया भर का, और मेडिसिन लिखेगा तो उसको डालने के टाइम भी नहीं रहता। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मेडिसिन कब डाले, सनलाइट में डाले कि अंधेरे में डाले, वाटर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। वहाँ पे वो लड़का बैठे तो 2 घंटा रह के डिसीज़ का जो मेडिसिन डाला है उसका एप्लीकेशन अप्लाई हुआ है, उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसको चेक करने के लिए ये सारा सिस्टम नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे एकेडमिक में जो भी लड़के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उनको 3 महीना आप लोग एजुकेशन दीजिए या सेमेस्टर वाइज, और 3 से 4 महीना फ्रॉम बॉटम में, पहले वे में वो जाए, वो पाउंड में काम करे, बॉटम से काम करे, पानी कैसे लेना, कैसे क्या करना, फीड कैसे देना, कितना देना,
मैक्सिमम इंडिया में जो भी फार्मर्स होते हैं ना, वो किनारे में होके फीड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि वो सिस्टम गलत है, क्योंकि पूरे तालाब में फिश होती है और हमको फीड देने के लिए ना बोट का सिस्टम, अगर आपके पास बोट नहीं है तो 2 ड्रम बना के, एक टेक्निकल सिस्टम होता है कि 2 ड्रम बनाए, उससे एक प्लेटफार्म बनाए, 4,000-5,000 रुपये में वो सिस्टम बन जाता है। हमको बोट में फीडिंग करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए, क्या बार करना चाहिए। हैचरी में हम देखते हैं सबसे पहले कि कई जन 2 बार फीडिंग करते हैं या 3 बार फीडिंग करते हैं या 4 बार फीडिंग करते हैं, जबकि हैचरी में 24 घंटे में कम से कम 25 से 30 बार फीडिंग करना चाहिए, क्योंकि जो फिश का सीड होता है ना वो बहुत छोटा होता है, उसका पेट भी ना बहुत छोटा होता है। हम लोग देखते हैं कि सर्वाइबिलिटी नहीं आती है। सर्वाइबिलिटी क्यों नहीं आती? सर्वाइबिलिटी इसलिए नहीं आती है कि हैचरी स्टेज में उसको डाइजेस्टेबल फीड मिलता ही नहीं, और जितने टाइम उसको चाहिए उतने बार मिलता ही नहीं है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोग आप लोगों को समय समय पे फार्मर लोगों को बताते रहते हैं। क्योंकि टाइम कम है और सर का आदेश भी है कि मेरे बाद भी 3 लोग बचे हैं और टाइम भी बहुत हो रहा है, तो मैं यही करता हूँ। थैंक यू, यहाँ पे प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका मैसेज मिल गया सबको, एंड आई थिंक आप जो बोल रहे हैं, जो ट्रेनिंग चाहिए, सम कुछ हद तक ऑलरेडी ऑल ड्यूरिंग BFSC एंड ऑल वी हैव इंटीग्रेटेड दैट फील्ड ट्रेनिंग एंड हुआ है। फिर भी आपका सुझाव जो है वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, Vijay, you can speak well. I don't think this is required. Okay, okay, bolo. Abanti. So he is Mr. Vijay Devta, and Abanti group of company. You know, Abanti is the proportion of the market, feed market. Feed is 50 to 60%, and Abanti is the leader. The leading in company India. right now in India. Yeah. So since I think 8 years we are the leading company in India in shrimp feed formation. So good afternoon everyone. Mo na Vijay Kumar Devata. So mo Abanti Feeds ro Odisha ro jo marketing and technical head अछि. जेहेतु सार अनुरोध रही है कि ओडिया रे कहया पाए, तेणु मो ओडिया रे ही आरंभ करुच्ची। समय बहुत कम, मोर मेन मुख्यतः जो प्रेजेंटेशन रहिबो सेटा चाषी मान रिलेटेड रहिबो। मु भाबुची एठार किछि चिंगुड़ी चाषी अछन, मु जानि जानिछि बालेश्वर रे तांको जानिछि सार को, से म जानिथिबे नै, मु सियोर नो। तो तेणु मोर आज एक्चुअली मोर जो रिक्वेस्ट थिला सार कि आपनकर जो फीड मैनेजमेंट उपर कहया पाए, तेणु मु प्रथमे आपण मानकु कहबी फर्स्ट स्लाइड जे फीड एक्चुअली जो आमर फीडटा जमीती आपण मैंने समस्ते जानते कि सबू एनिमल को सबू ऑर्गेनिज्म मानक कौन दरकार ना फीड दरकार, तार कौन ग्रोथ पाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पाई, सेमती चिंगुड़ी को तार ग्रोथ पाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पाई दरकार। बट प्रश्न उठुची जे एठारे आमे जो पिलेटिंग फीड बा अबंध जो फीड तैयार करछे सेटा काहे करा जाउछ, कहीं जो आम जो चाष कर कमर्शियल वे कर समस्ते चाहते कि प्रॉफिट जनरेट करेंगे। कमर्शियल वे मैंने आम गोटे पर्टिकुलर टार्गेट कर प्रोडक्शन करेंगे, आम जमीक आम गोटे गोटे पोखर पर एकर 5 ରୁ 6 टन आम प्रोडक्शन कर, तो से भाया प्रोडक्शन टार्गेट आम कल्चर कर गोटे साइज जोटा कि आमको दरकार जमी 30 काउंट कि 20 काउंट ए गोटे साइज डिमांडिंग साइज जो रोचे मार्केट में से भाया करने चाहूँ। तो से आमको कौन दरकार ना आर्टिफिशियल फीड दरकार। नेचुरल फीड देखो फीड 2 प्रकार, गोटे है नेचुरल फीड, गोटे है आर्टिफिशियल फीड। नेचुरल फीड रे आपन जो जू प्लांक्टन फाइटो प्लांक्टन एगुड़ा सब अच्छे, बट आर्टिफिशियल फीड रहा स्पेशली आम जो पिलेटिंग फीड दौरान श्रिम्प इंडस्ट्री में खाली पिलेटेड फीड। तो से पिलेटेड फीड कौन फायदा कौन अच्छी आउ तार नुकसान कौन अच्छी। तो पिलेटेड फीड्र प्रथम फायदा है फास्ट है बालांस न्यूट्रिशन। जमी आप चिंगुड़ी को सपोज आप गोटे चिंगुड़ी को जी प्रोटीन दरकार, जी विटामिन दरकार, जी मिनरल दरकार, से परिमाण से मात्रा जब आम दबा ताले तार ठीक भाव में ग्रोथ हम। और आमर जो टार्गेटेड ग्रोथ जी आम 100 डेज 30 काउंट करने चाहूँ, 90 डेज 30 काउंट करने चाहूँ, से एवरेज ग्रोथ आम पाइपर। ओके, ता छड़ा तार स्टेबिलिटी पिलेट फीड्र कौन होची वाटर स्टेबिलिटी बहुत अधिक, जमी 3 to 4 आवर्स गोटे पिलेटर फीड्र स्टेबिलिटी रही है। सो से 3 ରୁ 4 घंटा भीतर कौन होता है ना चिंगुड़ी समस्त फीड को कंज्यूम कर देता है, खाई देता है। जदि तार जदि स्टेबिलिटी कम रहिबो ताले कौन हम ना अधिक वेस्टेज हम, वेस्टेज कौन हम ना बॉटम खराब करिवो, बॉटम खराब कले आपनकर ऑर्गेनिक लोड बढ़िबो, ऑर्गेनिक लोड बढ़ले प्लांक्टन बढ़िबो, प्लांक्टन बढ़ले पुणी प्लांक्टन क्रॉस पुणी ऑर्गेनिक लोड बढ़िबो, तापर डिजीज बैक्टीरिया सो मेनी माने प्रॉब्लम्स आसीबो। तेणु आपन कौन दरकार ना पिलेटिंग फीड रे मेन
मेन हूँ कौन ना वाटर स्टेबिलिटी आ बैलेंस डाएट रहा दरकार नेक्स्ट स्लाइड एटा आप जानते आपड़ जो मुझे फीड मैनेजमेंट विषय आपको कहबी प्रथम फीड विषय कहली फीड जो मैनेजमेंट विषय आपको कहबी जे आम प्रथम प्रश्न उठूँ कि आम फीड मैनेजमेंट करवा कहीं आपण मैंने जानी समस्त जो मैंने चाषी मैंने अच्छा साइंटिस्ट मैंने अच्छा आप जानी गोटे जो आप चिंगुड़ी चाष श्रीम्प कल्चर करुँच से सबुठ अधिक खर्च आपने फीड्रे ही करते ऑलमोस्ट मो हिसाब से प्राय 50% आप खर्च हो फीड्रे ही होता है तेणु जब आप फीडटा को ठीक भाव मैनेज न करेंगे प्रथम तो आप कमर्शियली आप लॉस करेंगे आपको गोटे छोट एग्जांपल देवी बर्तमान आपंकर फीड प्राइस सपोज 100 रुपीज पर केजी ओके जहाँ मार्केट प्राइस कहूँ तो 100 रुपीज पर केजी जब आप फीड्र जब वेस्टेज हो 0.1% दैट मीन्स आप 10 टंका पर केजी देखो आपंकर गोटे बर्तमान आम जो सिंगुड़ी प्रोडक्शन एवरेज साइज सर 50 काउंट बा 20 ग्राम आम एवरेज एफसीआर नौ 1.1 बा 1.2 से जगह जब 0.1 अधिक एफसीआर हो जाए 10 टंका आपंकर कस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 टंका गेन हो 10 टंका लॉस हो ता छड़ा जी फीड वेस्टेज हो 1% आप अधिक दौरान फीड वेस्टेज हो सो ऑर्गेनिक लोड आपंकर पोखर बढ़ीज बटम ऑर्गेनिक लोड बढ़ीज ऑर्गेनिक लोड बढ़िया द्वारा आप जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड माने जो टॉक्सिक गैस फॉर्मेशन सबकि से ही तैयारी हुए तेणु आपंकर फीड नष्ट हवा द्वारा प्रथम तो आप कमर्शियली आप लॉस कर सीधा स्ट्रेट 10 टंका आप 0.1 एफसीआर जब बढ़ी जाऊँ आप 10 टंका लॉस होची जदि आप पुणी आउ गोटे कौन पुणी आपंकर aquaculture जो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो तेणु फीड मैनेजमेंटा निहाती आवश्यक आपंकर कल्चर को सक्सेसफुली करने एवं आपन को मेनली टू अर्न मनी माने पैसा इनकम करने आपन को मुख्यतः फीड मैनेजमेंट ही सबुठार इंपोर्टेंट आउरी सार जो कहले आपन सीड एंड फीड क्वालिटी से तो ओके बट भल फीड पाइला परे भी आपन जब भल सीड पाइला पर ठीक से फीड मैनेजमेंट न करि परिबे आ मैनेजमेंट रे आपनकर जो फार्म स्ट्रीम फार्म रो जो इकोसिस्टम मैनेजमेंट बा वाटर मैनेजमेंट सॉइल मैनेजमेंट मुख्यतः रोल होची आपनकर फीड मैनेजमेंट सेति पय हमें फीड मैनेजमेंट उपरे हमें मुख्यतः हमें ये कौन फोकस करिबा नेक्स्ट स्लाइड अच्छा आपण मैंने जानी जो एफसीआर कथा कहली फीड कंजम्पशन रेशियो सपोज आप आमर गोटे स्टैंडर्ड थाए जमती आपंकर धर 10 ग्राम 100 काउंट रे 1 एफसीआर 15 ग्राम में 1.1 एफसीआर 20 ग्राम में 1.2 एफसीआर एमती गोटे स्टैंडर्डाइज थाए ताठू अधिक केबे करबा नहीं तेणु आप माइंड रखिए जो टार्गेटेड ग्राम आप करने चाहते आप एफसीआर केते हवा दरकार सेटा माइंड रखिक आप प्रथमे फीड ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड मुझे आपको गोटे एग्जांपल देवी ये देखो गोटे मुझे कष्ट प्रदर्शन कर नेक्स्ट स्लाइड टी दिखाँ यहाँ हूँ आप कहली आप डिटेल जे कौ काउंट्रे कौन माने आपंकर एफसीआर आवश्यक से कहली आपको तो आपको आउ गोटे एग्जांपल देवी मुझे गोटे कष्ट प्रोडक्शन बाहर करी लास्ट ईयर गोटे फार्मर टोटल 49% टोटल खर्चर जो कष्ट प्रोडक्शन चिंगुड़ी गोटे केजी चिंगुड़ी प्रोडक्शन करने 49% एक्सपेंसेस होची फीड रु है तेणु फीड्र जो एफसीआर बहुत इंपोर्टेंट आ फीड्र एफसीआर को केमिति कंट्रोल करेंगे से विषय में आलोचना करवा नेक्स्ट स्लाइड यहाँ जो आपंकर कहूली कस्ट प्रोडक्शन जो कर देखूँ 49.62% टोटल खर्चर 49.62% खर्च होकर फीड्रे नेक्स्ट अच्छा आप जो फीड मैनेजमेंट करेंगे फीड मैनेजमेंट नॉर्मली दुई प्रकार आम कर गोटे है माने फीड ब्रॉडकास्टिंग जो करा जाए दुई प्रकार गोटे है ब्लाइंड फीड करा जाए अप टू 30 डेज पर्यंत आ गोटे है चेक्ट्रे फीड केतबेले ना 30 डेज पर जितेबाला स्ट्रीम मैंने आसती चेक्ट्रे को से समय आम जो ऑब्जर्वेशन करता आम चेक्ट्रे फीडिंग कही ब्लाइंड फीडिंग आपड़ केमी करेंगे गोटे कैलकुलेशन अच्छी तार जमी आपंकर फास्ट आप जो स्टॉकिंग कले फास्ट स्टॉकिंग पर आप एवरेज बॉडी वेट इंटू फीड परसेंटेज इंटू सर्वाइवल नंबर सपोज एग्जांपल हो आप 10 ग्राम बॉडी वेट होती आपंकर फीड परसेंटेज हो 0.4 आउ आपंकर लक्षे जाँल अच्छी ताहले आपण कौन करेंगे 10 ग्राम इंटू एवरेज बॉडी वेट 0.04 फीड परसेंटेज मीन्स 0.04 इंटू आपंकर है सर्वाइवल नंबर जोटा 1 लाख आपन आसे अराउंड 40 kg सो आम से भाई गोटे कैलकुलेशन करता ब्लाइंड फीडिंग रे आम गोटे मुझे गोटे डाटा पूरा देवी नेक्स्ट स्लाइड देखा जो थे आम पूरा कैलकुलेशन करूँ कि फास्ट 30 डेज आप केमी ब्लाइंड फीडिंग करेंगे नेक्स्ट स्लाइड इवेन आप फास्ट 30 डेज पर भी आप जो कैलकुलेशन टाक माइंड रखा दरकार कहीं बेले बेले कौन हुए ना फीड बेले बेले आपंकर जो जमी टेम्परेचर बढ़ी जाए से स्ट्रीम मानक कंजम्पशन बढ़ी जाए किंतु आप जानते कि आप पोखर लक्षे जाँल छाड़छन तेणु आप लक्षे जाँलू केवे अधिक फीड देवे ना कौन भी कंडीशन देवे ना मान जदि देवे आपंकर जी अच्छा टेक्निकल कंसर्न पर्सन कि जहाँ को आप फॉलोअप कर भल भाव ऑब्जर्व करके बढ़ेबे ओके
नेक्स्ट स्लाइड ताले गुड फीड प्रोग्राम रे आपनकर कोन जाउचे गोटे हला ब्लाइंड फीडिंग कहले मेन होचे चेकटर ऑब्जर्वेशन चेकटर केते बेला आपण ऑब्जर्व करिवे फर्स्ट 30 डेज परे आपनकर 2 रु 2 घंटा 15 मिनिट रे आपण चेकटर ऑब्जर्व करिवे जो 2 घंटा रु 2 रु 2 घंटा 15 मिनिट भीतर जदि आपण फीड कंजम्पशन हेछि ताले आपण फीड बढ़ाइबे मु से डाटा मध्ये आपण देछि केते फीड बढ़ाइबे केते केते कंजम्पशन हेले केते फीड बढ़ाइबे नेक्स्ट स्लाइड अछि तो जो तापर आ कौन है आमर जो देखो आपन खला जो ब्लाइंड फीडिंग जो करेंगे फीडिंग समय आम दुई प्रकार फीडिंग स्ट्राटेजी फॉलोअप कर ओडिशार लोकालिटी फार्मर मैंने गोटे है डाइक फीडिंग कौन कर आपंकर जो सराउंडिंग डाइक रे बुली बुलिकी फीडिंग करुँचे करने द्वारा कौन हुए ना बेले बेले पवन गोटे आड़ को दिए तेणु फीडिंग जोन गोटे थाए एक्चुअली चिंगुड़ गोटे फीडिंग जोन थाए जो एरिया सी रहे और से एरिया खाद्य पड़े से खाइब जब आपंकर फीडटा डाइक साइड पड़गला ताले ठीक भाव खाद्य खाइब ना तेणु आप बोट फीड बा रोप फीडिंग किसी लोग कहते रोप फीडिंग कि बोट फीडिंग को मेनली प्रिफर करने आवश्यक जो थे कि आपंकर मैक्सिमम जो फीडटा वेस्टेज हेनी मैक्सिमम फीडटा चिंगुड़ी पाखे पहुँचे चिंगुड़ी कंज्यूम कर तार ग्रोथ ठीक रहा नेक्स्ट देखो आप एग्जांपल मत देछि जो बोट फीडिंग करटा हूँ बेस्ट प्रैक्टिस आप बोट फीडिंग कि रोप फीडिंग करेंगे नेक्स्ट स्लाइड ओके आउ गोटे जिनस आपंकर रहा नेक्स्ट स्लाइड ओके नेक्स्ट स्लाइड आउ गोटे जिनस है गोटे एरेटर पोजिशनिंग बा फीडिंग जोन आम कहू गोटे पोखरी में आप सब मन रखिथे एरेटर पोजिशनिंगटा एमती रहा आवश्यक जमी 70% जो पोखर 70% एरियाटा जो एरेटर वाटर करेन्ट कभर करवा दरकार ता अर्थ कौन ना 70% एरियाटा आप खाली कहीं एरेसन जब ठीक रनिंग करेंगे आप जानते सर्कुलेट कले कौन हम ना वाटर करेन्ट क्रिएट हम वाटर करेन्ट कौन हम जितक फीड वेस्टेज कि कौन भी फेकल मैटर जो अच्छी चिंगुड़ से वेस्टेज गुड़ा सेंटर को जीव सेंटर डिपोजिट रही चिंगुड़ी किसी इन्फेक्शन हेनी से आप एरेटर को सेमती पोजिशन रखा दरकार कि एरेटर ठीक भाव सर्कुलेट हम आउ दैट भी तार पोजिशनटा कौन हो ना 70% फीडिंग जोन जो 70% जोनटा टोटाल वाटर मास 70% कवर करवा दरकार वाटर करेंट ताकि आप वेस्टेजटा कमिज वेस्टेज जो जोनटा कम एवं फीडिंग जोनटा बढ़ जो कि मैक्सिमम आप फीड फोरकास्ट कर एरिया आपंकर कौन हम ना फीड ठीक भाव में चिंगुड़ी कंजम्पशन कर नेक्स्ट स्लाइड यहाँ आप देखो मुझे एरेटर पोजिशनिंग आपको देदेछि यहाँ हूँ सेंटरटा जो होची आपनकर सेटा हला आपन वेस्टेज जोन बा मोल्टिंग जोन मध्य ता साइड रहा मोल्टिंग जोन नेक्स्ट नेक्स्ट ओके अच्छा वर्तमान समय गोटे मुझे देखी गोटे वर्तमान समय बहुत एरिया कौन हो लेबर प्रोब्लेम हो बर्तमान आम लेबर पाइबा बहुत डिफिकल्ट एंड दैट टू भी जो मैंने ट्रेंड लेबर जो मैंने चिंगुड़ी चाष जानी से भाया लेबर पाइबा बहुत डिफिकल्ट हो वर्तमान समय से जिनस को आखि आगे रखी वर्तमान नुआ गोटे टेक्नोलोजी इम्प्लीमेंट करी जोटा कि गुजरात रे स्पेशली फार्मर्स मैंने यूज कर ऑटो फीडर कौन हम ना आप टेक्निकाली एडजस्ट करेंगे कि केते समय आप केते फीड दरकार आउ मतलब केते फीड आप ब्रॉडकास्ट केते फीड पकेबा को चाहते और केते समय भितर पकेबा चाहते ताको एडजस्ट करदेले से सही समय भितर आपनकर सेतिकी फीड से करिवो आपनकर फोपाड़ी ब्रॉडकास्ट करिवो हला तो से एटा गोटे टेक्निक जोटा कि आप रिप्लेस करेंगे आप लेबर को लेबर कस्ट कमी पार ओके चेक्टर मैनेजमेंट कौन ना चेक्टर मैनेजमेंट आपको कहली गोटे है टाइमिंग आउ गोटे है चेक्टर पोजिशनिंग आउ गोटे है चेक्टर साइज आप जो चेक्टर मुझे देखी ओडिशार मैक्सिमम फार्मर स्क्वायर चेक्टर यूज कर स्क्वायर चेक्टरटा बेसी यूजफुल नुह कहीं स्क्वायर चेक्टर कौन हुए फीड वेस्टेज हुए कर्नर में आप रही फीड कर्नर रहीगले कौन हम चिंगुड़ी कंज्यूम करें आप चिंगुड़ी कंज्यूम न कले आप जापर कि फीड खाई कि ना फीड रही जाए ऑटोमेटिक आप भावे फीड खाई चिंगुड़ी फीड कमेदेवे से जगह आप कौन करेंगे ना सर्कुलर एरेटर यूज करेंगे एरेटर हाइट 6 इंच रहा दरकार 6 इंच ऊपर रही आप ठीक भाव चिंगुड़ी गले भर खाई पारे और जंप करके बाहर को जापर नेक्स्ट स्लाइड ओके ओके ठीक अच्छे मुझे फाइनाली कनक्लूड करुँच देखो आपंकर है चेक्टरटा हूँ मुख्य देखो 3टा जिन मुझे कहली आपंकर फीडिंग मैनेजमेंट गोटे है आपंकर जो जितेबाला आपंकर ब्लाइंड फीडिंग करेंगे से कौन करेंगे ना मन रखिए कि आपंकर जो फीड कैलकुलेशन अच्छी जो कथा कहली एवरेज बजेट फीड परसेंट सर्वेल नंबर सेकेंड थिंग आप जितेबाला चेक्टर देवे चेक्टर देखिए चेक्टर पोजिशनिंग जो देखिए एरेटर पाखरे चेक्टर न रहा दरकार एरेटर पोजिशनटा रहा दरकार कौन जमी कहली आप 70% टोटल मास वाटर मास कवर करवा दरकार ताहले जाके आपण जो फीड कंजम्पशन को कंट्रोल करेंगे फीड को मैनेजमेंट ठीक भाव में करेंगे आप फीड मैनेजमेंट ठीक है आप क्रॉप सक्सेस हम क्रॉप सक्सेस आप भल प्रॉफिट करेंगे थैंक यू वेरी मच Vijay for giving a quick brush up with feed management. Now I would request our Arun ji, Mr. Arun Das, for
giving his perspective for feed ingredient. As you know, the fish meal and other things are so difficult nowadays to get. He has initiated a very new thing with BSF larvae, and they are going to fulfill. That is also from the West. So over to. Good afternoon, everybody. We at Insectica we produce insect protein, which replaces the fish meal and brings sustainability and affordability in the feed. What Mr. Rao was talking before, like when the feed will be affordable, then it will be most profitable. So we are a insect farming company focusing on bringing affordable feed in form of supplying insect protein towards sustainability. And another thing, we are the first company in India who has developed the insect farming bioreactor, and which can be replicated globally and controlled from here, the insect farming and everything. And previously I was here in 2024. At that time we were importing some critical equipment from abroad. Now we have developed our own electronic division, which is really efficient, and we can deploy any kind of insect farming bioreactor around the world without any hurdles. And what we see now, globally, the insect farming industries are struggling to produce and to make the feed ingredient, produce the protein affordably. In China, it's $2.6 per kilo. In Europe, it's $6.3 per kilo. But we can supply the insect protein at $1 per kilo. That is the difference we are making. Thank you. Thank you, Arunji, talking about the insect and how cheaper they are making the black soldier fly larvae. Thank you so much. Now this is the time for the Neospark, and Venkatesh sir ji, you please talk about the entire perspective of the health product. They are the one of the best company for all the health product used in aquaculture, and he is the general manager, and he is also a very good scientist. They develop a lot of new product, and recently they have launched their feed also. Thank you. So good afternoon, everybody. The respected dignitaries on the dais and off the dais. Very thankful for the College of Fisheries, OUAT, for conducting the excellent event for the fulfillment of the whatever the lacunas in the aquaculture segment, which are currently facing both fish and shrimp farming together. But here I would like to focus one of the important topic, that is the mycotoxins impact on the aquaculture. There is a rising threat in aquaculture. So here I would like to go a little bit fast because already everybody is hungry. So sorry for the late session. Here we can see the global shrimp production from 2024 to 2033. So almost doubling the shrimp production as per the current data, with a compound annual growth rate of 3.9%. If you see the projected figures here, 71.9 billion USD to almost double figures. You can see 105 or more than the value of this USD in the coming another 8 or 9 years. But obviously, what are these projected figures? That requires a lot of inputs, including the shrimp feed as well as the healthcare segment. At the same time, the hatcheries, broodstock, and the all allied segments. But at the same time, if you see the percentage share here for the factors which are responsible for the production as well as the
growth of the industry, we can see the major segment is 14% the market acceptance. That is the price structure. And the second one is the control on the cost of the shrimp feed. Particularly, I'm talking about the shrimp segment. At the same time, the market accessibility, the third, that is 11%, followed with the disease and its prevention protocols, almost 10%. The rest all. But here the four more components which are affected on the overall shrimp market as well as the production segment. At the same time, what are the major concerns in the shrimp farming segment? If you see, the major is again the market price, the aqua feed and its cost factor. At the same time, the mode of practices that reflecting in the form of disease outbreaks. At the same time, number of other factors which affect on this shrimp farming segment. Then come to the quality of the produced meat of the particular the shrimp, the food quality and safety. These are the major concerns in the current international market that affect particularly the US and European market of our shrimp, produced shrimp. Particularly the 40% of the shrimp which are producing in India goes to the US market. Nowadays there are a number of issues starting from the antimicrobial resistance as well as the pathogen. Nowadays pathogen impact also is a concern. Because of that, nowadays the traceability as well as the quality issues are day by day the concerns for the shrimp export market segment. Here you can see a normal layman to the even ex-president of US, Obama. Everybody likes fish or shrimp because of the high protein. At the same time, the essential amino acids which are there is no meat, other meat can able to supply to the ever-growing global population. So obviously we need to depend on the more quantity of protein-rich and quality protein. At the same time, the essential amino acids content from the seafood. At the same time, if you see the data of the sea catches is declining or almost stagnated because of the over-exploitation as well as the pollution factors and the catching of the juveniles. There is a number of strategies we are applying, but still aquaculture is growing tremendously throughout the world. As India is the second highest producer of particularly the shrimp segment after Ecuador, and export market we need to safeguard because as per the central government norms as well as the EMPADA, it is an export-oriented unit. It started with the export-oriented unit. Now we are starting with the domestic consumption of the shrimp. That also very important. Unless otherwise we don't have developed the domestic market, it is sustainability is the question. Because nowadays US, Mr. Trump, the President of America, is planning to develop shrimp farms in US. So they are going for the local production as well as the consumption that may affect the Indian shrimp. But after all these factors, we need to see the domestic market and importance for the coming years. So here everybody knows, particularly fisheries colleges throughout the country need to focus on the quality of our produced shrimp or fish. But the quality means the total characters which are declared by the institutes or the international organizations. At the same time, the safety is very important for the consumer level. That is the reason the quality and the safety together is very important to make a sustainable aquaculture practice for both shrimp and fish. At the same time, if you see the why we need to have a quality and safety to satisfy the needs of the consumers as well as to ensure production of consumers from the health hazards. Nowadays, the contamination of the water, the antimicrobial compounds as well as the pathogens, particularly Vibrio, which are affecting on the gastrointestinal tract of the humans. So that those things will affect on the price as well as the demand of the produced shrimp by country. So obviously these are very important for the future prospects, and we should work more on this area to deliver a high quality shrimp or fish for the export
market segment. So like that, we can see the number of issues. So here, who will ensure the food safety and the quality, particularly the primary producers. Primary producers including starting from the hatchery, farm, processing, all the segments should coordinate in bringing the quality and the safety of the producership for the global population. At the same time, there are codex of elementaries, which are standard protocols, which are already developed by the different international organizations, including the FAO. So we need to adapt to those protocols for the future prospects as well as the sustainability of the segment. Then come to the how to protect our food supply and the human health. So starting from the young generation, they need nowadays, instead of junk foods, high protein food is very important that we need to focus for the ever increasing global population. At the same time, there are different approaches to make a quality and safety food, that is particularly GAP, good aquaculture practices, good marine practices, and good hygiene practices, as well as the good environmental protection. So unless otherwise we don't have any, all these inputs for the farming activity is very difficult to make sustain to get this much of from 72 to 105 billion US dollars of production globally. At the same time, HACCP based processing protocol and maintenance of cold chains and traceability are the source of identification of the where the mistake was happened, either from the hatchery, farm, or processing. All these things are very crucial for the sustainability. Then GAP, particularly good aquaculture practices that targets particularly environmental protection and improved fish and shrimp health concern, as well as the improved food safety and the same time ultimately the socio-economic sustainability. Nowadays, everybody talking about the price as well as the international profitability of the farming practices. Then come to the GAP standards that cover entire the process of the protocol from the environmental, social conditions, safety of the food, as well as the traceability, particularly hatchery, farm, feeds, and processing. So it's everybody's responsibility to take care of this, all the segments. So for example, if you see the GAP standards, there are a number of standards there they mentioned in their protocol, particularly the water quality concerned. Here, aquaculture itself, the water is very crucial for the sustainability of the industry in the form of either in the survivability of the shrimp or fish, its growth rate, as well as the better FCR to make a profitable venture for the entire process of the farming activity. Here at the same time, straight away I'm going to the another point, the mycotoxins and mycotoxicosis. That is another issue because nowadays the fish meal, which is major ingredient protein for the manufacturing of the aquaculture feeds, the source has been declined. Even central government, they announced no further new registration for the fish feed plants because of the over exploitation. In that case, alternative source of protein we need to see in that soybean plant source or some other source of protein like insect meal. So whether all these source of other meals, how it is affecting on the end product in the form of health of the shrimp or fish or its growth rate. For example, if you see the mycotoxins, particularly my presentation topic, here what is mycotoxin? It is simply a metabolite of the fungi, the molds. Simply we can see mold growth in the open foods. Everybody experienced it in their houses. So mold growth, particularly Aspergillus, Fusarium, and Penicillium. These three, they grow on the food items and they release some metabolites, their excreta in the form of metabolite end product. So these metabolites are having the toxicity or carcinogenicity on the end using animals, either it is a shrimp or fish or poultry or human. So in such a way, it affects the growth rate as well as the survival rate and economically the huge loss to the global aquaculture segment.
and it is well aware in the poultry segment in India and worldwide. But whereas in India, particularly for mycotoxin concerned, a negligible amount of focus is there. But nowadays, it started studying what is the impact of mycotoxins and how to control those things. But here, if you see all these modes, there are different nomenclature has been given based on their scientific name. For example, aflatoxin, it is derived from the A. flavus toxin. Like that, ochratoxin, A. ochrasian toxin, citrinin, based on the scientific name of the fungi are of different categories of Aspergillus as well as Fusarium and Penicillium. So at the same time, based on their mode of infection also, they have derived different nomenclature. Come to the three categories, Aspergillus, Fusarium and Penicillium, the fungal species, as well as its mycotoxin we need not impact. go very scientific. Just Going. wrap up, please. So just to create awareness among the upcoming students, they need to work on this area. That's the reason I focus this point. So you can see the mold growth on the food. If you kept for 24 hours to the 48 hours, the growth of the mold that is there in everywhere in the open air environment. At the same time, there are different feed inputs, ingredients, which are used in the feed manufacturing industry, and its impact is very clear. At the same time, there are MSP, minimum permissible levels, are also declared by the FAO documentation. You can see the particularly aflatoxin. There is A. flavus toxin, particularly its level should be below 20 ppb, parts per billion. The same time, ochratoxin, citrinin, geranium, the different toxins and this infection levels makes different MPL levels, maximum permissible levels. At the same time, if you see the mycotoxins and aflatoxin, the fish, how it is impacting, just I am moving fast. At the same time, the source of the contamination. Here in India, the southern part, northern part, western part, eastern part, the samples are analyzed, which shows the single mycotoxin, the 2 mycotoxin and 3 mycotoxin. So levels you can see there are multiple impact on the ingredients which are sourced for the manufacturing the feed that will affect directly or indirectly to the animal. So once the mycotoxins there in the feed, what happens? Poor growth rate, pale gills, reduced red blood cells count, anemia, impaired blood clotting, damage to hepatopancreas in the shrimp as well as liver in the fish, and a decreased immunity response and increased mortality. All these are the published data which indicates the impact of the mycotoxins. At the same time, you can see the enlarged liver because of the aflatoxins in the fish. So no action today, no cure tomorrow. So we need to safeguard our industry with proper protocols from now onwards. The mycotoxin management with different mode of activities by enzymes, by breaking down these mycotoxins with some sort of chemical compounds which are internationally accepted. With these, we have multiple products from our organization to take care of all these mycotoxins. At the same time, we have launched our innovative shrimp feed with less than 20 ppb aflatoxins with the highest return on investment. So far, in the last 6 months, we have launched our product, innovative product, Van Grow for shrimp feed, Vannamai particularly, the Mon Grow for Monodon shrimp. Here, our feed performance in the form of economics, return on investment. Once the farmer investment is, for example, 1 lakh, his profit is from 40% to 80%. That in the sense, for each and every farmer, he is going to get 40 to 80% of the profit with our feed consumption, because the high survival rate as well as the high growth rate and the better feed conversion efficiency. With all these 3 factors, our feed is showing excellent performance at the farm level. At the same time, for the holistic management, we need to have a proper information on the genetics of the animal, environmental, the management, health management, proper nutrition, and at the same time,
the transformation, what are the changes which are happened in the recent past, we need to apply for the better harvest. So ultimately here the last point I would like to share, even though genetics are good, what are the different broodstock suppliers from the California or Texas or Florida, they have different protocols, either growth factor or disease resist factor. But what are those factor? It affects only 15%. The next factor is the hatchery protocol which are producing the seed. The third one is the season, as well as the location of the farming practices. And the 45% is management. So here, to aware of these important factors, our students should come forward and know about what is happening worldwide and in India and within our vicinity Gopalpur farmers, what are the phases their problems are facing. Particularly, some of our farmers are asking for how to control white feces. The white feces is caused because of the dual infection, EHP and Vibrio. EHP makes holes or some type of injury in the hepatopancreas and the GI tract. Then the Vibrio, for example, the dry matter of 1 gram of the shrimp fecal matter contains 6,000 to 7,000 crores of bacteria. Automatically, these opportunity bacteria will take advantage, making the infection and the entire GI tract, including the belly of the shrimp gut, affect, and what are the shrimp feed taken by the animal, that will not be assimilated to the body, there is no growth rate. Even sometimes the reverse growth rate also has reported by some of our farmers. So to take care of all these things, day 1 onwards, because the hatchery protocol we need to see, for example, they use probiotics, immunostimulants like as well vitamin C, as well as the better disinfection practices. But once they reach to the farm, day 1 onwards, they need to replicate the same practices, then only we can get the better growth rate and better survival. That is the reason the farmers, sometimes they get 90 days 30 count, some other farms they take 120, 130 days to get 30 count. So all these, what are the DOC differences will affect on the profitability of the shrimp farming segment. So with this, I would like to thank you everyone. Thanks a lot. Thank you so much, Rao Garu, and we are happy that slowly the halls are also getting filled up. Only thing on the dais, we are again served with juice and all to take it forward for some more time. Now this is now everything like starting from the input, the genetics and input in terms of seed, quality feed, and everything we had, and you are getting a good production. But after that, what comes is marketing. That is very important. And here is our marketing guru and branding guru, and you can tell. And he is one of the very strong voice as far as shrimp export is concerned in India, and from Indian product, how that gets exported and all those things. In every forum you will find out. He's a very strong speaker also. I request Mr. Kamlesh sir to speak few words. A very good afternoon. Post-lunch afternoon. In fact, I would like to know how many of you have already taken your lunch. Please raise your hands. So it is a gap, in fact, between the lunch and the siesta. Because in Odisha, we have a siesta after the lunch. Invariably, after we take a lunch, we feel sleepy. And I should not come in between that. I should not be a stumbling element for the lunch and the sleep. So I would try to cut it short as far as possible. I'll not try to bore you guys with the prospects of international marketing or branding or whatever a brilliant introduction that has been made by Dr. Panigrahi. In fact, till date now, within the last 25, 27 years or maybe 30 years of my academic career, my industry career, and as an entrepreneur, as an exporter. And I've been officiating as the president of the Seafood Exporters Association for the last 8 years and 2 years as the vice president of the state. I would tell you, in fact, now whatever business one thinks of doing, one envisages that I should get into this kind of a business, he should start first from the market, not from the product and then go to the market. That is an erroneous way. If you are doing that, you are having every chance of getting ruined. So don't
start your business, then go and search for the market. Instead, first understand where is the market, what is the requirement, what exactly the customer needs, whether I can do it, get it, supply it, and earn profit out of it, making it commercially viable, then get into that. Otherwise, don't get into anything, any business. Don't produce, then go and search for the market. Never ever do that. If you're doing that, you are calling your doomsday. That's one thing. Second thing, Sher was telling about entrepreneurs, why the entrepreneurs or the students should come into entrepreneurs. Because, we have been groomed in a way where we look for the glamour part of life. We never look for the hard part of life, or we are not trained that we should be tough enough to work hard and earn our livelihood. We are never trained that way. We are always trained for a glamorous life. If you go to the western part of the country, you will find a typical auto rickshaw fellow. If you are having a squabble with the auto rickshaw fellow, he will tell you that, kya boss tu manager jaisa baat kar raha hai? Because he has seen the manager having a glamorous life. In Odisha, if we have a squabble with a rickshaw puller or an auto rickshaw driver, we say, kya boss? Kaun baba tu ekdam IAS officer bhaliya katha varta karchu. So for us, the IAS is the glamorous thing. It's never business. We have never been encouraged by our parents that you get into business. Never by the society that you get into business. The same person, if he qualifies from this campus into one of the top-notch companies, and he goes back home and says the parents, Bapa mangu jai koi baje moi chakiri te paichi campus re, kintu mu bhabuchi nije business kari. Bapa koi you have gone mad. If he goes back and tells the parents that I want to get into business, and I don't want to get into the company where I have been selected, parents will immediately tell him that you've gone mad. The society will tell, the friends will tell, are you gone mad? Are you gone crazy? And we are having such a wonderful conference. Such a wonderful conference. But the unfortunate part, when I was sitting there and I was watching everything, majority of the students were sleeping on the top floor. So that is our level of sincerity. What are we here for? There are experts, there are industry experts, there are tremendous brains here. How many of us have really approached them, asked them, what should I do? How do I reach you? How do I talk to you? Will you feel disturbed? How many of us have done that? We come here, have a party type of a kind of a thing. And very unfortunate part is the leadership also. It comes late. We all sit cool. Because we are here to bring in a transformation in the whole process of renouncing jobs and getting into entrepreneurship. Are we really serious? Definitely not. So let us look into our own self, how self-centered we are, how serious we are for the social benefit, and let us get out of that trap of being self-centered to society-centered to the global center. If we are becoming global-centric, if we are becoming society-centric, then only things will change. And that transformation time has already come. We need that introspection. We start working on that. With that, again, I don't want to be a disturbance in between your lunch and the sleep. Thank you very much. Thank you so much. Very powerful, very short and powerful talk. And so what basically the transformation, we not only we want in aquaculture or fisheries, also in our life, that's what is leading, not only by us, but also by leaders. And thank you so much. And now for the public here, if you have some short question, immediate question, please raise it. And we would love to answer that. खाना खा के जो लोग आए हैं कुछ तो पूछ लीजिए. You are using, I think, Mr. Arun Das, you are using, I think, you have given very short but beautiful lecture. And actually, you have told that you are the leaders in BSF. And then you are supplying, I think, $1, something you told.
you have something like, and it is very competitive. So basically you are using Hermasia illucens or any other species? Hermasia, that one only. Okay, okay. So, okay. Okay. So how much lipid and all protein content of your product? Okay. The protein concentrate basically you are using. Okay, defatted you are using. No, I return tomorrow morning. Yes, early morning. Yes, definitely I'll come over here. Yes. So good, no. And you are having any byproduct for that or only protein concentrate? You have a byproduct or only protein concentrate only? Only, no, bro, okay. Byproducts are there? Okay. Achha. Okay. Hello. Yeah, I just have a question to sir, Mr. Sir, for you, sir. Sir, actually, right now, what I observe, this is a big concern for export industry. That is antibiotic. I think you must have heard that. So, what your, I know you are president of Export Association in Odisha. So, what this Export Association is going to do for that, and what is the role of government to prevent over that? Thank you. You see, antibiotic comes to the farm, antibiotic farm product को आसुची industry रो कोठु आसुची ताकु तो exporter नहीं की दौनी आमर किसी नेता थिले माने past रो कथा मु कहूची somebody from some state, I don't want to name the state also, जेता बेले से छोड़ी जे antibiotic बाहरी करी Indian export shrimp export बाहरु reject है क्या आसुची सांग सांग कोले exporter टको arrest कर दियो माने exporter रो जेमती कोटे antibiotic देई देले तारो $2-4 अधिका है जो रोजगार आम मंत्री कहले कोन ताको आगे बांधियो से एक्सपोर्टर को बांधियो अच्छा देन हाउ कम द एक्सपोर्टर इज इन्वॉल्वड इन दिस नो वे ता द्वारा किसी बेनिफिट हवार नहीं कोनोसी मेडिसिन वाला कोनोसी फीड वाला कोनोसी so many things, there are so many persons who are moving around in the field area farm area तेणु किए कौन बिकिला Second thing is, the government is not publishing जे previously आमर export केते थिला केते reject हैतला वर्तमान export केते growth हैची rejection केते हैची rejection कमी ची ना बढ़ी ची ता विषय रे किछ नाही rejection है गला paper रे बड़ बड़ बाहरी जो antibiotic बाहरीला हॉलैंड रू container फेरिला तो तमे तो तम निजो गोड़ काटुछ तमे तो जाई विदेश रे गपुछ तमे तो न्यूज़पेपर रे फ्लैश करूछ जे हमर antibiotic बाहरला बोली आपण हस्ते जीवाच्छेदी किए अच्छी तार प्रतिवादी तब तो तुम निज ये कर प्रथम कथा हूँ सरकार चाहिए एंटीबायोटिक जाऊँगी केमी अच्छा से हौटी रिजेक्ट कौटी हो यूरोप रिजेक्ट हो एंटीबायोटिक वर्ल्ड को देला किए हु हैज गिवन द एंटीबायोटिक टू द वर्ल्ड सो वी आर नॉट एबल टू काउंटर देम सो एंटीबायोटिक रिजेक्शन होची गोटे प्लॉय इट्स ए टेक्निक इट इज ए barrier. It's a barrier which is not specific. कहीं की barrier ना यूरोप चाहूँची इंडियन मार्केट रे पसिबो तार मिल्क प्रोडक्ट बिकिबो जोटा वर्तमान जे इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करी नाही एवं that is the reason they find out reasons now how to reject these products. केते रिजेक्ट होउची I think there will be 12 or 13 containers rejected in the last year. What is the volume of export happening? It's in lakh tons. About $8 billion worth of export is happening. 8-10 container means 14-15 container जब reject होउची 15 कोटी टंकार माल reject होउची. So they will make because you see government, you see business ray when you are operating, maybe it is domestic market, maybe it is international market. You have to have competition. US ray Indian shrimp has got 40% market share. 40% market share and above is for any product you are a market leader. That's a very thumb rule.
जदि 40% रु अधिका तुम बेपार होची कोनोसी मार्केट रे यू आर द मार्केट लीडर सो तमे जेतले मार्केट लीडर तुम संगे जे कंपीट करूची the follower he will try to pull you down how will he pull you down by defaming you because 40% जे पहुंची से फालतू कचरा देकी 40% रे पहुंचनी भल प्रोडक्ट दे पहुंची तेणु तुम बदनाम केमती करा हो बदनाम हेले ही तुम मार्केट खसिबो लोक किणिबेनी so these are techniques these things will continue unless and until government tomorrow declares that all antibiotic plants in the country are closed then let's see how the Europeans will say that no you are adding amaro jetiki amar loko 140 कोटी लोक जेतिकी एंटीबायोटिक खाइलेनी से आउ किछि हो न हो परिश्रा एवं एस्केटारे सी जाउची माटी रो पानी की पानी रो जाई की वाटर बॉडी रे ऑलरेडी मिसी साइलानी सेठु पानी रो आसिला आपण पानी पुरेइले तो चतुर्दिग तो एंटीबायोटिक हेई सारिलानी तमे कहबो कबडा एटा हमको हेगला एंटीबायोटिक बाहरी वाला एक्सपोर्टर जाई मिसेइला ना चासी जानि सुनि कि मिसेइला जे एंटीबायोटिक ता मिसेइ देल हबो ताकू जने आसिकी किए कहबो जे एटा प्रोबायोटिक एथर किछि एंटीबायोटिक दे कोई देले बढ़िया ग्रोथ हो तारा बेमारी हमनी से बेचारा जानिनी से पढ़ी जानिनी मोस्ट केसेस रे ही इज नॉट रीडिंग तब चासी तो जे पढ़ी जानिनी अशिक्षित सी तो अलग कथा पढ़ी जानी जो मैंने पाठ पढ़ुन से भी औषध खाइला बेले केबे औषध पैकेट टाक पढ़ंतिनी दे नेवर रीड द थिंग्स और कंपोजिशन रिटन इन द मेडिसिन पैकेट केते जण औषध मेडिसिन रो कंपोजिशन पढ़ी औषध खांती प्लीज नोबडी सो वी आर जस्ट ड्रिवन बाय ब्लाइंड फेथ जण आसिला कहि देला भैया दे देला सी गला फैक्ट्री टेस्ट हला टेस्ट है कि विदेश को गला लोक टेस्ट है कि जाउची एठी किछि बाहरुनी एठी जोड़े जोड़े टेस्ट करूछथि आई टेल यू आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ फाल्कन बर्तन तार स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी निजर करिछि बालेश्वर रे तंका प्लांट रे स्टेट ऑफ द आर्ट रो निजर टेस्टिंग फैसिलिटी करिछि आफ्टर दैट दे सेंड द सैंपल इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव रिजेक्शंस बिकॉज़ दे ऑपरेट अराउंड 2000 कंटेनर्स दे सेंड जोड़े कंटेनर बाहरी पहिला रिजेक्ट इज दैट नो फाल्कन हैज डन इट with sending 2000 containers out of which 2 containers are found having antibiotics is Falcon responsible for that so we are in a system where we believe in shifting our responsibility ye mera problem nahi hai bhai tera problem the day I tell that this is my responsibility how it gets into my farm who is the supplier of this then things will solve yes, thank you sir. Most of the time, actually, what you told correctly is that international diplomacy and also, you see the hospital disposal, where we are using a lot of antibiotics. So it is not aquaculture itself, but from other industry it is coming and making. Fish farm, they are maximum they are using antibiotic. When if you look this West Godavari district, Bhimavaram and all that is all fish farm is getting converted to shrimp farm. So there only maximum antibiotics has been detected. So one more thing, sir, cannot we implement, sir? Cannot we implement labs from government side to test antibiotic in every region? There were 2 Europeans. In between there are 2 Europeans who had come and they were preaching that no, don't add antibiotic. The first question I asked them that who has introduced antibiotics in the world? It's you people. So why don't you come out with a gadget? These days, now this is prompting an entrepreneur. Then we can come out with a gadget. Now, if we can today test pregnancy by just putting the urine on a piece of paper or by pricking and taking out blood, if you are able to test diabetes, so why not have a pen like gadget and prick it into the prawn and find out whether it is having antibiotic or not? So we need to work in that. So after they listen to this suggestion of mine, they said this is a wonderful idea, even one can carry this to the market and can check in the market whether the fruit is having antibiotic, whether the fish is having antibiotic, whether the meat is having antibiotic or not. I said, no, start working on the innovation. So when there is a problem, every product is a solution to a problem. So if this is a problem, let us try to find out a product which can solve this problem. Thank you. Nice, sir. To add a few points on this AMR impact on the global seafood consumption, here, first thing, usage of antibiotics in aquaculture. Indian government signed MOU with International Organization on this antimicrobial resistance.
The reason behind this process, usage of antibiotics, not only it makes the resistance to the bacteria, which whatever the vicinity of that farming area, the human pathogens like E. coli, Salmonella, Shigella will get resistance, and that will infect the nearby population. So this is also reported in many publications by Dr. Saab, Karuna Sagar sir. Is very clearly indicated not only in India and throughout the world. At the same time, the other factors we need to see, the residual of antibiotics because of the higher dosage level. The antibiotics there to control the human infections caused by the bacteria, to control the whatever the particular infection. There is a dosage, accordingly they need to use some course of days. But here, the high concentration dosage usage that will lead to the resistant, not only the shrimp pathogen, Vibrio-like species, the human pathogens will get effect in that area. Those are the major concerns. That is the reason WHO, FAO, and the other international organizations focus on this subject to aware among the farming community to come out of the impact, because most of the pathogens in shrimp farming particularly is viral pathogens, WSSV and some other. But here microbes including the Vibrio, we can control with the proper biosecurity protocol. For that reason, from our side, News Park, we are talking about the 3 bios concept: biosecurity, bioremediation, and biomineralization. With these 3 processes, we can control the pathogen load, not only in the waters, in the shrimp gut also. With that, we can have a sustainable farming activity. Not only that, internationally, our shrimp will be accepted with premium price. So that is my points from my side. Thank you. I am looking at Fish Feed division, and our brand is JB's Fish Feed, and I am here doing marketing last 17 years in Odisha, state of Odisha also. But last 17 years, what I am observing, कि in Odisha का जो fish farmer है, maximum people are engaged. Poor people are engaged in only fish farming business. They are using or consuming traditional feed and are low protein feed because of they are not getting good profitability. Compared to Odisha, if you say UP market or Bihar market, this type people are growing very good, and matlab culture is going very good, and people are engaged, new one people are engaging there. And compared to UP Bihar, Odisha people are consuming fish more than UP Bihar people. So I am looking ki why not only fish farming is only 2 area. One is either Puri se Brahmapuri, this area Berhampur area, and second one is Balasore and उसका जो भद्रक चांदीपुर एरिया, ये 2 एरिया पे, इसके अलावा कहीं नहीं होता. तो इसको क्या हम इनलैंड फिशरीज को मार्केट में एंट्री और करवाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? बिकॉज दिस वन इज़ द ओल्ड वन इंस्टीट्यूशन फॉर फिशरीज यानी फिश एंड श्रिम्प बोथ एक्वा के लिए. सेकंड वन ये कि जो किसान क्रेडिट का लिमिट है वो भी ना 3.5 लाख 3.5 लाख, सम पीपल आर गेटिंग बेनिफिट, सम पीपल आर नॉट गेटिंग बेनिफिट किसान क्रेडिट का. उसको भी कम से कम 1 एकड़ की फार्मिंग के लिए भी हमको ना गवर्नमेंट से कुछ ये करना चाहिए. वी नॉक द डोर ऑफ गवर्नमेंट, बट 3.5 लाख में एक पॉन्ड को जो ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, दैट इज़ इनफ. थर्ड वन एक चैलेंज आता है फार्मर्स के लिए ना इलेक्ट्रिसिटी का. डिफरेंट गवर्नमेंट दे आर चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी, आई थिंक कमर्शियल, यहाँ भी कमर्शियल है क्या इलेक्ट्रिसिटी? We'll keep discussing because our next program, the guest Padma Shri Madam also have come. So yeah, so we'll bind up with this. If there is no other discussion point, we'll bind up with this, and with a lot of thanks to all my panelists and of course the chair and Sahu sir and Kajal Chakraborty sir, and I would request Dr. B.K. Das sir to come and take this one. No, it was really a learning session. Thank you all for your benign presence here. Maybe this is, if it happens every time,
you will find a lot of talents in the college. They are grooming. That is the thing. Again, farmers. So instead of going somewhere, because infrastructure is here, you can cut down your infrastructure if you want any of the specific programs. You can definitely approach the colleges, and we are the research organization. We are happy to partnering in any of the systems you develop, because if everything goes together, then system will grow. System never grow in a fragmentation. So everywhere see, when togetherness we can build the empire, maybe fish or shrimp or industry we can build up. This is the message from outside, though it is a time is very less, but still you have a lot of energy has come. So we hope this energy will remain, and maybe the circle of energy may be concentrate in the college. That will evolve in a big way, which can go to many parts of the, not in the state, in the country. So hope this will be a good interactions. All of enjoy, because lunchtime, other things, people are coming and going. Still, we have the lot of people there to receive, not only farmers. There are industries, the students, the academia, and the research organization. Thank you once again, all of you. And token of love from my side. Yeah. Thank you, sir. And we have, of course, covered almost all the ecosystem, from freshwater to brachywater to marine ecosystem, from all input to felicitate our industry partners. Yeah, please. So now Kamlesh Mishra sir. Yeah. Sir, yeah, sir, yeah. Acha. You can come first. Thank you so much, Kamlesh ji, for coming and gracing the occasion. आइए Venkateswar Rao ji from Neos Park. From long distance, he has traveled from Hyderabad all the way, and last 3 days he is with us, last 2 days. Thank you so much for coming. Mr. Arun Das from Insectica Biotech is bringing innovation in black soldier fry and a lot of things for nutrition. Thank you so much. He's also with SIBA and making feed for Bekti and other fish. Dr. Ambashankar is there. Now Vijay Devata from Avanti group of company. He's the regional manager. Yeah, there is a demand you reduce the feed rate. Yeah. So he has spoken about feed management. So you try to reduce the FCR. ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ feed ଅଛି. Siba also have developed a feed, very low cost feed. You use that. Thank you. Yeah, from Abis, our friend, Mohammad Asif Saab. Thank you so much for coming and joining us. Thank you. Yeah. Our son of our soil from Gopalpur, and he's a leader in the quality seed production here, Mr. Kameshwar Rao ji. And for this college, always any function, anything related to industry, he is always there. Sir, thoda side ho jayega. Thank you. Seed rate. Quality seed. Now our Sapan Patra, he is a product from this college, and now he is giving employment to so many people, and he told about the quality and about the freshwater, Amur carp and all these things. Thank you so much.
Yeah, his turnover now 3 crore, but very soon he will cross 5 crore. Thank you. Now I would request Bikeda sir to felicitate the chairman and other thing. Yeah. Thank you. Dr. N.P. Sahu sir. Dr. Kajal Chakrabarti sir. Thank you. Thank you so much. Now the program got concluded. Thanks a lot. I thank Dr. Akhoj Kumar Panigrahi sir for coordinating this session.